Dr. Naik. Dr. Naik is ex-director, CPET, who will be our special guest for today's webinar. Then we have Dr. Irfan Mir from CPET, Balasore. A very warm welcome to Dhananjay Sahu sir, who is the CGM of IOCL. Then we have Chief Manager, IOCL, Sri Aurobindo Sahu, who will be taking the presentation. We have people from the District Industry Center, from the District Industrial Promotion Agency. We have Sri Jagdish Misra sir, who is an eminent industrialist, a mines owner, and the head of our industry citizens forums industry task force. We have with us Dr. Amitav Nandi, who is the chairman of our citizens forum. Then we have engineer Aditya Panigrahi, who is an esteemed member of the citizens forum. We have Sri Ranjan Banerjee, who is an esteemed member of the citizen forum. Some other people are expected to join us. So as and when they join, I'll introduce them to the group. Today we invited IAS Soumya Ranjan Pradhan as our chief guest, but because of some other commitment from his office, some VC, he's not able to join us right now, but probably he'll be joining later during the discussion. So I would request others to introduce themselves to the August gathering here through the chat box. And now I'll request Professor Nandi. I'll request Professor Nandi to invite, welcome the speakers, esteemed guests, keep it talk for 2-3 minutes. Please welcome Dr. Nandi. People's mics are on. Can it be switched off? Disturbance. Yes. Jagdish sir, can you mute yourself, please? Professor Nandi. Yes. This afternoon, we have been discussing to disturb. Professor Nandi, you are not audible at all. Is it? On.
My audio. Hello. Hello. শোনা যাচ্ছে না আমার ওইটা খোলেন ছেড়ে দেন Professor Nandi is not audible. On his behalf, can I request Sri D.P. Misra, sir, to please come up and share his thoughts. Can you hear me? Yes, audible, sir. Hello. If you can kindly switch on the video. Pardon? If you can kindly switch on the video, sir. My video is doing some. I'm not able to get in, but let me speak. Okay, fine. Who are on the dais actually? Sir, we introduced most of them. Probably you joined a little late, but Dhananjay Sahu, CGM IOCL is there. নমস্কার Sri- স্যার নমস্কার ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ସ୍যাର ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାରି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ You have to speak for all. we will But I must tell you, on behalf to the audience, if today the petrochemical growth in Odisha is going ahead, Dhananjay Babu is one of the responsible persons actually. thank you so much. And my thanks to him for driving the growth. Thank you so much for encouraging sir, so kind word. Thank you. I had written a paper 1972. What Nichamani Khuntia was the trade union leader in Paradip. Se mate କହିଲେ ପାରାଦୀପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ତୁ ଟିକେ ଲେଖ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ତାର ଗୋଟେ କପି ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି thanks to you, some of the items which I envisioned in 72 are coming up, although after 50 years, but still it is coming up, and it is making Odisha a front state in chemical industry in the eastern region. So I have a lot of regards to Dhananjay Babu and his team actually. Thank you sir. Thank you sir. Dr. Nayak ଅଛନ୍ତି କି? Dr. Nayak has not joined yet, sir. ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ଡକ୍ଟର ନାୟକ is another pillar of the plastic industry. See, who has, if the plastic processing industry is growing at the rate of 10% per year, lot of contribution is from CPET.
And CPET was the first organization, and Dr. Naik was is the real mover and shaker for this, and all the processing industry know Dr. Naik actually. And thanks to Dr. Naik, there is a plastic park in Paradip, and there are some plastic industries in Jagatpur, and I think there was some proposal in Baleshwar, and thanks to all of you, now I'm hearing in Mayurbhanj actually, and so it's a great thing. So if you want me to start, shall I start now or? Yes, yes, please, sir. Okay. The Dhananjay and others on the dais, Dev is my relation, and so I take this opportunity of thanking the organizers and envisioning the plastic industry in Mayurbhanj, which is not backed up by the raw materials. They will have to bring the raw materials either from Haldia or from Paradip, but it's not that a big deal actually. If you see in the India's plastic industry, I am 60 years in this industry. So I have seen the first plant of polyethylenes in Risra in near Calcutta by ICI Industries. And they manufacture ethylene from alcohol compared to what Dhananjay Babu is going to do from the cracking of naphtha and all that. So since then, the plastic industry has started, but the growth has been substantial in the later part of 90s and basically in the 20s actually. Today the industry is a market size of about 20 million tons per year, but the per capita consumption in India is still lower than many countries, and there is a lot of gap for the growth. The total the annual turnover is somewhere around the about 25 to 30 to 2,500 to 3,000 billion rupees, and it is expected to go to 4,000 billion by 2029. I think these are the numbers me as an old man who have seen, but Dhananjay would be able to give the right numbers because he's in the thick of the job actually. So there has been a good rate of growth, but still we are much below in the per capita consumption, and with the digitization, with all these things coming up, that there will be substantial growth, and the various items, plastic is getting into the area where metal was there before. Because of its the lighter weight and because of its strength and because of all these things, plastic is in the in majority of the areas like piping and all those areas. Now, one of the area where people used to know plastic before is in the HDP oven sacks. That started the basic plastic work in Odisha actually, because our entrepreneurs are limited and their vision also is limited. They at that time started because of the fertilizer selling the HDP oven sacks to the fertilizer plants in Paradip, and culture also was functioning at that time.
And so that is the area. But today it has gone into the housewares, packaging, medical, all various directions. The problem is the single-use plastic, which has been, uh, which is banned kind of thing. But because of that, the recycling of the plastics has come as another industry. The recycled plastic, recycled reuse of the plastics is very much, and in India, it's a very big industry actually, as compared to many other countries. We export a lot of plastic products, films, biaxially oriented polypropylene, then the sheets, and all these things we export, including oven sacks. The employment that the plastic industry gives is about 4 million, around 4 million employment it provides, but it is going to go in a big way, actually. There comes the government now, how to integrate all these items and push it further. So the concept of the plastic park is a very good one, and it is we are falling back the others, like I was telling to Dhananjay Babu and others, that we have Singapore. If anybody goes to Singapore, you visit Jurong Petrochemical Park. Jurong Petrochemical Park has only 7,000 acres, but it produces goods worth of $50 billion. Anything you want is available in Jurong. But I had gone to, in China, the chemical parks are very popular. They're in Shanghai, they're in Nanjing, they're in Beijing. I had gone to quite a few of them. Nanjing was the largest petrochemical park, like Ludwigshafen in Germany, and the the concept of this park is that in the park owners or the government owning the park, they provide the warehouse, they provide the steam, electricity, they take care of the environment for the total, and they have the research and development organizations in the same park. That is called a central facility, which we had planned in the PCPIR, if you have heard the name, Petroleum Petrochemical Investment Region, which was done when I was the Director General of Indian Chemical Council in 2007. But unfortunately, thanks to lackadaisical of the government or no initiative from the private sector, the PCPIR as a concept has yet to be crystallized. But notwithstanding, the locations which were identified, Dahej, Paradip, Mangalore, Vizag, and so some of these locations, the chemical industry has come up sporadically. And then like Dahej major, there's some raw material supplier downstream is by OPAL, ONGC Petrochemical Additions. In Paradip is Indian Oil. So these are called in the PCPIR parlance, these are called the anchor client. Anchor client supplies the raw materials to the downstream. Now the people who will be putting up the processing plant, they are responsible only for their battery limits processing plant, where the central facilities will provide steam, electricity, the warehouses, then the all this is central facility, and any effluent treatment plant or effluent, taking the effluent and
So all these things are provided as a central facility. So the processing plant has not to spend money on the on this offsites and utilities, which is normally 30 to 40% of the project cost actually. So they save that money. So it is like a plug and play that they just make their processing plant, bring the processing plant, and plug and play, and it is done very fast. And so plastic park also should be in the same fashion, where the government should provide all the non-remunerative facilities, where the at cost, and the plastic processing plant will focus their attention onto the product actually and delivering the product, and then it becomes a win-win for all. So I think that the culture of such plastic parks has crept in Orissa, thanks to Paradeep, Baleshwar, and now Mayurbhanj. And then our entrepreneurs will make it and think it bigger and do much more than what is envisaged. Today, in the plastic industry, the names are Reliance is the leader in the plastic industry in Hajira and the Jamnagar, and Phenolics, the downstream, Haldia Petrochemicals. These are all the names in the plastic where from you can get the raw materials and for the downstream processing. So I think that with Mayurbhanj, not very far from in a manner carrying cost of the raw material either from Haldia or from Paradeep will be the minimum, with rest of the facilities around and township and all the rest of the things would be available there. So there must be a proper report which could be prepared by SIPET and program bringing the entrepreneurs, and then start the entire theater of manufacture of the plastic downstream in Mayurbhanj. And I wish the organizers best luck. It's a good thought, and I hope I will be hearing more about. Hello. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the enlightening talk. And now, may I request Dr. Irfan Mir? Dr. Irfan Mir from CPET Baleshwar. Yeah, good evening to all the distinguished participants of this webinar. It is indeed a great pleasure for me to be a part of this webinar. As rightly said by respected Mishra sir, CPET has been contributing a lot in the development of the industry in various regions, and we are very privileged and proud that we have been with the industry in Orissa, and our center in Bhubaneswar being the pivot for the development of new products or for testing related activities or support from the government. And we are very happy to receive a great support from the industry, and we have been appreciated for our contribution to the industry at different forums, and that's a great experience for us. And in a shorter purview, I can say that CPET is actually
made for aiding the industries, for appreciating industries to look out for new avenues in the plastic field. As far as we are right now in Balasore, and as rightly pointed out by Mishra sir also, so Balasore has a plastic and polymer and allied industries cluster with a huge potential, and the industries are doing quite well with around some 500 plus to 750 crores as their turnover. Around 50 industries are core plastic industries, and I wish that we'll have one such cluster in Mayurbhanj as well. And at the onset, I can just say that CPET as a whole and CPET Balasore particularly will be happy to join hands with the industry for the development of this cluster in Mayurbhanj. And we are always there to help, to guide, and in any form, whichever form we are needed, we'll be there to help you. Thank you so much for aiding us in this important webinar. Thank you so much. Thank you, Dr. Irfan, for extending your support. Sir, Jagdish Mishra, sir, please. Sir, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣା ଯାଉନି sir. Mute ଅଛି. ଏବେ ଆସୁଛି ତ? ହଁ, ଏବେ ଠିକ ଅଛି sir. ମାନେ as an industrialist, ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବୁଛି, basic problem is first we have to identify the entrepreneurs who will be interested in plastic industries. Mayurbhanj district ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ Balasore is already rich in this type of industry, Mayurbhanj adjacent Mayurbhanj କେତେ ଆମେ successful ହେଇପାରିବ, that we have to see first. If there is any new item or new technology, then only we can come up. But apart from that, a particular line rate जो ଅଛି Mayurbhanj रे से आगे देखा पूरा इन्वेस्टमेंट करबा पर लोक केते अछंती, केते टेक्निकल लोक साउंड अछंती, तापर गवर्नमेंट रो हम की बेनिफिट मिलुछि, एसब नाम रकम जिंस देखला परे जे कोनसे दोती इन्वेस्टर आसलो. बट इन्वेस्टर मान को जो अवस्था से माने तो जानि सुनि को नुवा जिंस पसे चाहिबेनी. जेमति हमर मिनरल बेस्ड अछि बा Mayurbhanj जेमति नॉन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एठी जेके भी जानबो जे हम मिनरल रे किछ करले सुविधा अछि. हमको फास्ट जानवा पड़ो जे बेनिफिट कौन मिल पारो जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो मार्केट रे से तो जानले हम तापर से लोग पस पारो. तो आई थिंक बड़ बड़ जो टेक्नोक्रेट्स होते एठी तापर हेल्प जदी मिले जे किछि कॉस्ट एनालिसिस जदी करा जाए एंड इफ इट इज वर्केबल देन ओनली वी कैन कम आउट फॉर द इन्वेस्टमेंट. And the experts are there, they can better guide regarding the cost analysis and other things, and then in future we can expect that something will come up. But first we have to identify the entrepreneurs, those who have money to invest. If there is limited people are there and they are not interested, then how can we expect all this development? This is Don't worry, sir. My name is Nursian Mahapatra. I'm an entrepreneur and I'm having connectivity throughout the world. I'll jump in at the right time. Right now I'm traveling, so by another 15 minutes I'll be free. You keep on talking. I'll tell about the ecosystem, about myself. Okay? Please continue. I'm just listening. If there are entrepreneurs and they can guide us that how it can become a successful venture, it's most welcome. Let us see. Now those who are the experts, they have to highlight that how we can get into this business. So I request the experts to take care of this thing. Thank you very much. Sir, ଏବେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଧନଞ୍ଜୟ ସାରଙ୍କୁ ସେ keynote address ରଖିବେ. Good evening, Devahata Babu. Good evening, all the delegates who have joined through web from various locations. DP Mishra sir, thank you very much for your kind word and encouragement. And from Mumbai, I think you are joining from Mumbai, and other who are there on the web. So at the outset, I must welcome everybody
to this forum on behalf of CAPO's Industry Task Force. ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ I belong to ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି but I have all my activities linked to Odisha only. So we are bringing a lot of investment in Odisha. Amro IOC ro 15 million ton होता हूँ ओडिया कोई भी चढ़ियो तो Sir, please. We have a 15 million metric tons refinery. ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିନ୍ଦୀ କହି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ I'm happy as a son of soil. I'm really delighted to talk Odia. But anyway, actually, Amaro Odisha everything is there. Everything you have touched that mineral, rich in mineral. Amaro 4.5 crores population, Odia population, Semankara consumption, demand, sabu achi. ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେମିତି ଆମର how to bring entrepreneurs to this field. जोटा कि ଆମର ନୃସିଂହ ବାବୁ ବି କହିଲେ कि we need to inculcate few 1 2 3 few we have everything, all characteristics are available. 1 2 3 କିଛି जो ଅଛି missing link ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ link ହେଲା ଆମର right kind of business identification. Right पे कौन करिबा को इंडस्ट्री जीवा प्लास्टिक इज ए बिग सब्जेक्ट सेकंड हैला हाउ टू फंड इट जो थरे जो माने जेंति नृसिंह बाबू कहले अन्य माने भी अछंती जो माने एंटरप्रेन्योर दे कैन गाइड अस दे कैन हेल्प अस इवन वी कैन आल्सो हेल्प यू थर्ड हैला मार्केटिंग जेटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हमें प्रोडक्शन तो कर दबा ताको केबी इजीली मार्केट करिबा सो दैट आवर वर्किंग कैपिटल कैन प्रोटेक्ट ये तीनटा चारटा विषय यदि हमें वी कैन टेक केयर प्रोबब्ली हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करि परिबा स्किल सेट रो अभाव नहीं ओडिसा रे आपण ऑल इंडिया जे कोनसी जगह को जिबे जोठी प्लास्टिक हब अछि माने परंतु कलकत्ता हैला कि वापी दमन सिलवासा हैला कि आपण आसंतु अहमदाबाद हैला जोठी कि जिबे प्लास्टिक इंडस्ट्री रे आपण ओडिया लोक को पाइबे आइदर दे आर फैक्ट्री इंचार्ज और टेक्निकल पर्सन ऑपरेटर दो लेवल कोनो स्किल सेट रो भाव नहीं ओडिसा रे स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल इन प्लास्टिक इंडस्ट्री ये तीन चारटा जो लिंक मिसिंग लिंक अछि ताको केमिति हमें वी कैन ब्रिंग टुगेदर so that entrepreneurs also can come and invest in Odisha. And particularly, you have already touched upon Baleshwar neighboring district, Mayurbhanj, which almost 25-30 plastic industry operational अच्छी. आपण जदि आसीबे जगतपुर को किंबा जिबे पारादीप को आसी पारादीप में 3टा यूनिट ऑपरेशनल अच्छी प्लास्टिक इंडस्ट्री. And we should learn from them and help them together. कि केमिति आमे तांको हैंड्स ऑन सपोर्ट करिवा केमिति तांको आमे गाइड करिवा सो दैट दे कैन आल्सो कैन पुट अप यूनिट्स इन मयूरभंज आल्सो हमरो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सिटी होसी ओडिसा रे आउ हल्दिया रे ओडिसा रे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रो गोटे पॉलीप्रोपिलीन प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल अछि जोटारे हमरो 680 केटी माने मासु को आमे तयारी करू ऑलमोस्ट 55,000 टन्स ऑफ polypropylene different grades. Similarly, गोटे MEG plant भी operational अच्छी वर्तमान पारादीप रे capacity 357 KT. MEG is a feedstock for polyester value chain. MEG is a feedstock for polyurethane value chain. MEG is a feedstock for automotive coolants. There are so many areas. तापरे going forward, PTA गोटे purified terephthalic acid PTA plant, it is under construction. So that is capacity is 1200 KT. That means 1.2 million tons capacity. So it is going to come sometimes in January 2026. And जेतबले PTA city available हैला पारादीप रे MEG already available अछि ए दुईटा फीडस्टॉक को यूज करिकि आपण पॉलिस्टर वैल्यू चेन रो जे कोनसी प्रोजेक्ट भी करि पारि भद्रक
$300 कोटी पॉलिस्टर यार्न प्रोजेक्ट भी वर्तमान इंडियन ऑयल परस्यू करछि जॉइंट वेंचर विथ एमसीपीआई होछि हमर टीसीजी ग्रुप कंपनी जो माने जो कोलकाता बेस्ड सेमान को सहित हम मिसिकी हम गोटे यार्न फैक्ट्री करूछु भद्रक रे जोथे आपनकर डीटीवाई एफडीवाई एवला यार्न तैयारी हबो जोटा कि आज ए फीडस्टॉक यूज हबो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज HPL हल्दिया पेट्रोकेमिकल रो भी आपण हल्दिया रे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अछि ब्यूटाडाइन अवेलेबल अछि ब्यूटाडाइन इज ए फीडस्टॉक फॉर रबर केमिकल्स or other products like ABS or SBS, SBES. There are different specialty chemicals. ता छोड़ा सेठी हमरो IVL धनसरी पॉलिस्टर पेट चिप्स भी तैयारी करछि जोटा कि यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट बॉटल्स तो रॉ मटेरियल रो वर्तमान ईस्ट रे वेरी गुड we can utilize those raw materials in any kind of industry which is going to stay. धनंजय बाबू आज्ञा हम आपको जस्ट खाली जनइबाकू चाहे जे एमसीपीए रो डायरेक्टर होचंती हम ओडिया पात्र बाबू डीपी पात्र साहब अछंती से भी एंड धनसरी पॉलिएस्टर रो चीफ एग्जीक्यूटिव इज ए बेंगोली बट फ्रॉम केंद्रापड़ा बी चट्टोपाध्याय राइट तेणु आमर राइट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल वी कैन हैव गाइडेंस फ्रॉम दिस जो कहले मिश्र सर कहले डीपी मिश्र सर कहले सो गाइडेंस रो भाव नहीं ओनली थिंग 2-3 थिंग्स इफ वी कैन लिंक फॉरवर्ड आई थिंक वी कैन ब्रिंग 10-20 इंडस्ट्रीज इमीडिएटली एट मयूरभंज सो हैविंग सेड दैट there is a huge capacity going to come in Paradeep. We are going to set up a dual feed cracker complex in Paradeep with an investment of 61,000 crores. For that, we are now taking land. The land is 2,200 acre land, just adjacent to our existing refinery. In that land, we'll have 1.5 million tons of ethylene cracker. सेथरे हमें नाफ्था आउ गैस को क्रैक करके सेथरु हमें प्रोड्यूस करिवु मोनोमर लाइक एथिलीन प्रोपिलीन तापरे ब्यूटाडाइन ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 तापरे हमरो बेंजीन भी प्रोड्यूस बट बेंजीन विल बी यूटिलाइज्ड बाय आवरसेल्फ विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक फिनॉल 300 kT फिनॉल आसीबो 200 kT आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आसीबो जोटा कि फीडस्टॉक यूज हुए इन सैनिटाइजर इंडस्ट्री जो हमरे कोविड टाइम रे यूज होतला सैनिटाइजेशन तापरे ता से पीवीसी आसीबो 300 kT 600 kT हमरो पॉलीएथिलीन आसीबो तापरे 550 kT पॉलीप्रोपिलीन आसीबो ए भलिया हमरो 3.1 मिलियन टन रो नुवा पॉलीमर प्रोडक्ट्स आसीबो बाय 2030 So going forward, we'll have all varieties of product in Paradeep itself. तेणु जो डीपी मिश्र सर कहते जे Paradeep PCPR, so as an anchor tenant, आमे different kinds of raw material provide करिवु, आउ ताको use करिकी downstream industry also can come. So future is very bright. Only thing that we need to work and do our groundwork right now itself so that we can put up so many industry being investment to Odisha. Mayurbhanj is a better choice. Mayurbhanj Amro, it is very close to Haldia. It is very close to equidistance, I can say, Paradeep. So and very close to Bhadrak. You know, Mayurbhanj is a district which can bring lot of investments in this segment. So I wish all the participants all the very best. Any help you need, any assistance is required in this segment, we are there to help you. Thank you, Devababu. खाली देव गोटे पदे कहूची हेलो हेलो Sir,
मोर खाली रिक्वेस्ट होची सिपेट को जे सिपेट कौन कौन डाउन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट हे परिबो कारण धनंजय बाबू कहले पॉली प्रोपिलिन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीएस्टर ए सबू रॉ मटेरियल मिल जीवो प्रोसेसिंग प्लांट को खाली पॉलीस्टाइरिन नहीं जदि तांकर बेंजीन surplus थाए ताले they can put up a styrene and polystyrene plant. So ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସିପେଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 5 पेज କି 10 पेज ର ପ୍ରୋଫାଇଲ इन्वेस्टमेंट के को कैपेसिटी हब केते इन्वेस्टमेंट लगिवो कौन लैंड लगिवो सबू करिकिरी तापरे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर और गोटे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मु जते बेले ओरिटको रो मैनेजिंग डायरेक्टर थिली 1984 रे मु करूतली ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सो एंटरप्रेन्योर को डाकिकिरी आनिकिरी तांका हातरे प्रोडक्ट धरे देबे तांकर केते पैसा ए कैंपेन टा नकले इट विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे यार सर बहुत प्रोजेक्ट सर हमर आपन भलो कथा कहले सर हमर प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी तयारी हेची प्रोजेक्ट प्रोफाइल हम बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ताको सिपेट इफ दे कैन do some more project report if they can prepare then it will also help ना ना आपण जोटा तयारी हेची एटा भी सिपेट देखो कारण सिपेट ए विषय रे बहुत भलो कि जाने और तनो सिपेट हैज टू गिव द लीड एक्चुअली राइट सर आपण को आ गोटे भलो कथा हला स्टाइरिन अवेलेबिलिटी विल बी देयर फ्रॉम आईओसी फ्रॉम पानीपत तो पानीपत स्टाइरिन अवेलेबल ना पानीपत बहुत दूर हलानी पानीपत शिफ्ट करबा शिफ्टिंग ये इटु नै जिबा किछ क्वांटिटी जदि धनंजय बाबूकर बेंजीन सरप्लस थाए देन माय एडवाइस इज टू गो फॉर स्टाइरिन बिकॉज एथिलीन अछि बेंजीन अछि स्टाइरिन आउ सुप्रीम रो चेयरमैन हम ओडिया अछंती सार्थक बेउरिया जे आईओसी चेयरमैन थिले से वर्तमान सुप्रीम रो चेयरमैन तेनो सुप्रीम होची पॉलीस्टाइरिन रो लीडर इन द इंडिया ठीक कथा कहले सर से बडा सिपेट जदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को आइटम्स हेई परिबो छोटो छोटो यूनिट बसैया पई तार गोटे लिस्ट करके जदि छोटो छोटो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी रखनते तबे एंटरप्रेन्योर्स माने मानक पई सेटा यूजफुल होंता डॉक्टर नायक जे रेवेन्सा रे अछंती डॉक्टर नायक होचंती सिपेट रे प्राणदाता सो डॉक्टर नायक जदि इन्वॉल्व हेबे ताले बहुत जिंस आइ परिबो तांको सहित से जदि सर आज आसिना ताले तांको सहित कथा हे जिबा डॉक्टर नायक को आनंतु भितर को जदि आपनकर एटा करबे कथा डॉक्टर नायक को भितर को आनंतु एबे अरविंद साहू सर को मु रिक्वेस्ट करिबी से तांका प्रेजेंटेशन रखिबे सामने रे thank you Devabu. Good evening everybody all respected dignitaries जे माने आज जॉइन करचंती हमरो ए वेबिनार को सो मो पूर्वरु गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चीफ गेस्ट एंड कीनोट स्पीकर जा डिस्कस कले ताकू मुटिके डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री हिसाब रे आई वुड लाइक टू शो दैट कि फीडस्टॉक अवेलेबिलिटी जहाँ जहाँ अच्छी हमर एठी ओडिसा रे ता ऊपर बेस करी कि हमें कौन इंडस्ट्रीज करि परिबा एंड ता ऊपर हमें काफी सारा स्टडी भी करथिलु ऑन बिहाफ ऑफ आईओसीआर को सेक्टर रे को भली भाव रे आपण माने को मटेरियल अवेलेबिलिटी अछि आउ
कौन कौन इंडस्ट्रीज हे परिबो सेटा हमें ऑलरेडी करी चारिछु एवं आई वुड लाइक टू शो दैट मोर स्क्रीन वर्तमान विजिबल अछि ना देखा जाउछ विजिबल तो प्रेजेंटेशन मोड नहीं जाओ अरविंदो तो प्रेजेंटेशन मोड नहीं जा सर एबे जଣା पड़छि प्रेजेंटेशन है नहीं सर एबे पीपीटी मोड को दे दियंतो पीपीटी मोड को दियंतो स्क्रीन रो तळ को चली आसी पीपीटी पाको नहीं ऑलरेडी मु देइछि बट समो ठीक है ताको स्क्रॉल डाउन कर दियो हे जो एटलीस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड ते हे पारे नहीं हो नहीं ठीक अछि सर नले एमपी हाँ जोटा है कौन एबे ला Click on that icon. सर एबे कैन यू सी द फुल स्क्रीन मोड नो नो प्रथम पीपीटी मोड को आसीनी अपन से जो आइकन टा पर हाइलाइट करते तळ को आसंतु आपनकर जो 50% लिखा है सेपट सेकंड हां से आइकन क्लिक करो नहीं एपट आसंतु आ टिके एपट को लेफ्ट साइड को आसंतु अछि ना स्लाइड शो मोड ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी इन स्लाइड शो मोड वो ठीक अछि अपन आई थिंक किछ स्टार्ट करो हां स्टार्ट करो okay so today's presentation mu cover karibi following things like amar everybody knows ki plastics in our daily life ko bali avare काम करछि एवं कोन कोन जिंस हमें plastics रो बनै भी परिबा then how these plastic products are made केमती बना हुए एवं बेस्ड ऑन आवर जो स्टडी हमें करथिलु ता ऊपर बेस करी कोन कोन इन्वेस्टमेंट्स हे परिबो गोटे स्नैपशॉट की छोटो छोटो सेक्टर ऊपर मु डिटेल कवर करनी ताको आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द डिटेल्स बट व्हाट आर द probable sectors where investment can be made based on the feedstock and then that also covers something on the textile front and then incentive structure from government of Odisha kon incentive dochi particularly amar industry pai and then how IOCL can help you or how can like what supports can be extracted from Indian oil. We come to our daily life like सकाळु आरंभ करी कि हमर इवनिंग पर्यंत जते बेले आपण सोइबा को जाउचंती हमर प्रति स्टेज रे प्रति टाइम रे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमर लाइफ रे यूज करूचे बीट लाइक सकाळु उठी आपण सब प्रथमे ब्रश करचंती तापरे गादोचंती ऑफिस को जाउचंती खाइबा पई आपण फूड कैरी करचंती बा देह खराब पले मेडिसिन रिक्रिएशन पई आपण किछि खेल खेलुचंती एवरीवेयर जहां भी देखिबे सबुठी आपन को किछि ना किछि मरिबणर प्लास्टिक्स मिलिबो इट मे बी एनीथिंग लाइक मोठी कहूनी कि एटा ओनली वन टाइप ऑफ प्लास्टिक्स बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को यूज करके हमर डेली रो लाइफ चली छी एट द सेम टाइम मु सेही प्लास्टिक्स रो बना हुआ आउ किछि प्रोडक्ट ऊपर आपन को देखिया को चाहूची लाइक आपण स्क्रीन रे देखि परथिबे बोधे किछिटा प्रोडक्ट आपनकर अछि लाइक सबटो ऊपर ओवन सैक्स देन आपनकर हॉस्पिटल गाउन्स सिरिंजेस राइट कॉर्नर रे आपण देखिबे किछिटा रस्सी आपनकर देखा जाउची वेरी लो वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड डेली यूज होतबा प्रोडक्ट्स ने कि हाई एंड प्रोडक्ट्स मध्ये आपण एठी देखि परिबे किछि पेल कंटेनर्स अछि हमर हाउस होल्ड रे यूज कला वाला प्रोडक्ट्स अछि देन सम पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जोथरे हमें फ्लेवर्ड मिल्क एंड अदर वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट्स को पैक करूचे सिमिलरली ऑटोमोटिव फर्नीचर
then ice cream containers. These are few examples जोड़ा हमरो plastics रू तैयारी होची. Particularly these are made out of polypropylene. किछि आउ किछि प्रोडक्ट भी मैं देखिया चाहूँ जोड़ा आपण डेली देखुथिबे कोठ ना कोठी एनकाउंटर करथिबे. These are some pipes जो पाइप आपनकर घरे पोर्टेबल वाटर को ट्रांसपोर्ट करिवारे हो बा इलेक्ट्रिसिटी पई हो बा गैस ट्रांसपोर्टेशन करिवारे हो ऑप्टिकल फाइबर केबल मध्ये ये सब मध्ये आपण प्रत्येक दिन देखुथिबे. देन टार्पोलिन शु ने की कैरी बैग्स एंड क्रेट्स एंड किछि रोटोमोल्डेड टैंक्स जोटा हम घर ऊपर रखुचे पानी रो स्टोरेज करिया पई बा केमिकल स्टोरेज करिया पई हमनकर एल्ड्रिंग ड्रम्स बा छोटो छोटो 5 लीटर बा 2 लीटर बॉटल जोड़ा हम यूज करूचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को पैक करबा को. दीज आर फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स जोड़ा का हमें प्लास्टिक्स रू बनो परचे. this is not exclusive, like एथिरे बहुत प्रकार प्रोडक्ट हमें तैयारी करि परिबा. I have just given some examples जोथा हमें डेली हमें जानि छे एटलीस्ट हमें ए सब प्रोडक्ट को देखि पारुचे. ए प्रोडक्ट रे आगु को जिबा गुरु मु आपन को गोटे जिंस कहबा को चाहिबी कि प्लास्टिक्स हमें जते बेले प्लास्टिक्स विषय रे हमें कथा होचे हमरो प्लास्टिक्स का दी प्रकार नॉर्मली गोटे होची थर्मोप्लास्टिक्स आ गोटे होची थर्मोसेट्स. सो थर्मोप्लास्टिक्स जोटा थर्मोप्लास्टिक्स बेसिकली हमरो हीट देला परे से मेल्ट होबो एवं तापरे हमें ताको कन्वर्ट करबा. वरस थर्मोसेट टाको थरे हीट देला परे से पूरी तरह से कोन हबो सेट हे जिवो से रिवर्स हबोनी. तो हमर जहां भी डिस्कशन अछि एठी हम ए थर्मोप्लास्टिक्स ऊपर करबा. थर्मोप्लास्टिक्स को भली भाबरे काम करूची को भली भाबरे सेत्र अलग अलग प्रोडक्ट बनै परिबा ता विषय रे भी हमें डिस्कस करबा. There's some issue with I think slides move करछि सर ना सर एटा मूव करू नहीं. ओ ओके एबे सर मूव बोला अगेन मूव. ओके एबे पुणी आपण बदे सेकंड को आसी गले. some issues जोटा कि मु I don't know. ओके वर्तमान देखा होछि नहीं सर सेथरे गछंती आपण टाइप्स ऑफ लूना साइड दिखाउछ. नेक्स्ट सुजीत भाई जदी किछि गाइड करि परिबे. हां एबे ठीक अछि सर. पॉलीमर्स आसीगला. but some of the animations are not working. That may be one of the reason ki slide भी properly move होनी. So anyway, so more एटी कहबार थिला कि हमें जो प्रोडक्ट सब बनौछु सेटा दी प्रकार प्लास्टिक सु तयारी होची. गोटेला थर्मोप्लास्टिक्स आ गोटेला थर्मोसेट. एटी हमर जो डिस्कशन सब हमें थर्मोप्लास्टिक्स ऊपर रखिबा because that is abundantly available और easily available हम पई and most of the products are made out of that. and जो थर्मोप्लास्टिक्स हमर एठी अवेलेबल अछि लाइक हमर ओडिसा रे जदी हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड एचपीएल को नबा ताहले बेसिकली एई तीनटा जिंस हम पाखरे अवेलेबल होची एचडीपी एलएलडीपी एंड पॉलीप्रोपिलीन. सो सेगुडा को देखिबा को तार किछि पिक्चर सेठी देछि सेगुडा को देखिबा को एई भलिया ए ग्रान्युल्स रो हमें कन्वर्ट करिबा कोनसी प्रोडक्ट को एवं प्रोडक्ट रे जदी हमर कलर दरकार हुए ताहले नीचे हमें जो दिया है मास्टर बैचेस जो कलर दरकार से कलर हमें मास्टर बैच ऐड कले हमर कलर प्रोडक्ट आसी जीवो. लाइक आपण देखुचंदी पाइप रो कलर होची ब्लैक तेनु कंसर्न पॉलीमर माने कर हम एचडीपी रो पाइप बनोचे एचडीपी रो ग्रान्युल्स नबा और सेथिरे ब्लैक कलर रो मास्टर बैच ऐड कले सेगुडा को हमकु ब्लैक कलर रो पाइप मिलिबो. या फिर हमको यदि गोटे ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट दरकार अछि ताले हमको सिलेक्ट करिया को पड़िबो गोटे पॉलीमर जोटा कि ट्रांसपेरेंट नेचर रो हमको प्रोडक्ट दोथबो. सेथिरे हमको मास्टर बैच ऐड करिवार नै ट्रांसपेरेंट ओनली से प्रोडक्ट पॉलीमर टा को यूज करले हमको ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट मिलिबो. सो डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज हमर कोन हमर दरकार एंड प्रोडक्ट रे से अनुसार हम पॉलीमर को चूज करिबा एवं सेथिरे मास्टर बैच बनेबा. एला बेसिकली हमर गोटे प्लास्टिक प्रोसेसिंग हम जाउ कहूचे जोथरे ए पॉलीमर रू कन्वर्ट करबा हमें कोनोसी एंड प्रोडक्ट को.
এবং এই পলিমর নর্মালি এইভাবে ভাবে ব্যাগ রে আপনার প্যাক ହେଇକି আসে 25 কেজি র ব্যাগস এটা মু আমার প্রোপেল আমার ব্র্যান্ড নেম আইওসি র গোটে ব্যাগস মু দেখেছি 25 কেজি র ব্যাগস রে ইয়ে প্যাক ହେଇକି আসে সো প্যাক সাইজ ইজ 25 কেজি এই 25 কেজি को ନେଇକି ଆପଣ डिफरेंट मशीन रे ताकू आमे कोन करिबा प्रोसेस करेबा सो ए पॉलीमर गुडा को जते अपन देखुचंदी एगुडा सब ग्रानुलर फॉर्म रे अछि बा सॉलिड फॉर्म रे अछि ए सॉलिड ग्रानुलर फॉर्म रो हमको डिजायर्ड फॉर्म को जीवा को पड़िबो से डिजायर्ड फॉर्म को जीवा को हले हमको किछि मशीन रो दरकार पड़िबो से मशीन कोन करिवो कि ए ग्रानुल्स को गोटे मेल्ट रे कन्वर्ट करिवो विथ द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल हीट आ किछि माने मशीन रो शियरिंग हीट दीटा को मिसै की हमर ए ग्रानुल्स गुडा को कन्वर्टेड हेबे गोटे मेल्ट को एवं से मेल्ट को जते बेले से मोल्टन स्टेज रे थिबे से मोल्टन स्टेज रे थिला बेले आमे ताकू गोटे जहां भी रिक्वायर्ड शेप हमको दरकार से भली आमे गोटे शेप ताकू देई दबा किंतु एठी कथा होची कि जेहेतु एटा गरम अछि आमे शेप देई देले भी से सेटा को रिटेन करिवोनी इट विल नॉट बी एबल टू रिटेन दैट सो वी हैव टू मेक इट हार्ड तो हार्ड करिया बोले हमको ताको ठंडा करिया पड़े वी हैव टू कूल इट सो प्रथमे हीट दबा हीट देके ताको टिके मेल्ट करैबो मेल्ट करैकी ताको पुनी शेप देला परे आमे ताको ठंडा करिबा तो मु बेसिकली एटा कोन पई कहूची कि आपन को गोटे बेसिक आईडिया आसीबो कि पॉलीमर टा केमिति प्रोसेस हुए सो बेसिकली पॉलीमर प्रोसेसिंग रे आपन दीटा जिंस करचंती हीट देबे हीट देला परे ताको शेप देबे एवं देबन ताको ठंडा करिवे तो बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस से जिंसटा को मेल्ट करिया कहले हमें गोटे मशीन रो यूज करिबा से मशीन आपनकर लाइक कोन करिवो या ऊपर गोटे मेकानिकल वर्क करिवो ए मेकानिकल वर्क करिके से ताको मेल्ट करेबो नेक्स्ट स्लाइड जाऊ नहीं नेक्स्ट स्लाइड स्किप करूं सर some issues ओके सो जेमती मु कहली पॉलीमर प्रोसेसिंग रे हमें गोटे प्रथमे शेप दबा प्री शेप माने मेल्ट करिबा तापरे शेप दबा तापरे ताको कोन करिबा शेप ताको स्टेबलाइजेशन करिया को हमें ताको ठंडा करिबा मोस्ट ऑफ द केसेस रे थर्मोप्लास्टिक केस रे मे बलिया बरे ताको ठंडा करिबा सो कौन हमर एंड प्रोडक्ट दरकार बेस्ड ऑन दैट हमें प्रोसेस आ हमर जो रॉ मटेरियल ताको चूज करिबा दिस इज स्लाइटली टेक्निकल मु ता भीतर को जाउनी now polymer processing I wanted to run this animation and video but mate laguchi some internet ro issue जो जो चली बनी बेसिकली अपन जदी देखि परथबे एटा गोटे मशीन जा भीतर हमर ऊपर जो ब्लू कलर ग्रानुल्स अछि से ग्रानुल गुडा को फीड हला परे हमर धीरे धीरे भीतर गोटे स्क्रू रोटेट करूची से स्क्रूटा ताकू आगो को नै कि जीव स्टिल आई एम ट्राइंग जदी एनिमेशन रा काम कला देन इट विल बी हेल्पफुल सेटा देखा जाउची एनिमेशन देखा जी सर ओके नाउ यू कैन सी जस्ट पछरे गोटे मोटर लागिची मोटर सहित आपनकर गोटे स्क्रू अछि दैट इज स्क्रू एंड बैरल एंड एक्सटर्नली आपन जे देखिबे किछ रेड कलर आपनकर देखाउची सेडा का हीटर से हीटर देले हमर चारि पटे हमर गोटे हीट दबा हमें एवं ऊपर जेतेबेले ग्रानुल्स ता भीतर पडिबो एवं ए स्क्रूटा रोटेट करिवो से स्क्रूटा धीरे धीरे आगु को ए मटेरियल को कन्वे भी करिवो संगे संगे ताकू आगु को नेला बेल को मेल्ट भी करिवो कोन पइना एठी जो गैप थिबो गैपटा धीरे धीरे कमी कमी जाउथबो सो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल प्रोसेसिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग रे हमें मेल्ट करेबा तो मेल्ट करेबा काम हमर ए भलिया गोटे मशीन रे हबो तापरे आगु को जो भलिया हमें जो प्रोडक्ट बनेबा कथा से अनुसार ताकू शेप देबा बट मेल्ट करेबा कामटा हमर ए भलिया भाबरे गोटे मशीन रे हबो जोतरे गोटे मोटर थिबो गोटे स्क्रू बैरल थिबो आ कि एक्सटर्नल हीट रॉ मटेरियल फीड करी कि हमें ए भलिया भाबरे करिबा नाउ एटा हला बेसिक हमरो रॉ मटेरियल लो केमिति फिनिश प्रोडक्ट मिलिबो सो couple of years back आमे at Indian Oil we had carried out a study to see कि ओडिसा रे सेगमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट रो डिमांड कोन हमरो प्रोडक्शन कोन आ नेबरहुड स्टेट रो केते आसुची एवं आगु को जाय कि केते डिमांड हबो सो दीज आर सम ओल्ड फिगर्स बट स्टिल इट मेक्स सेंस कोन पयना अपन देखि परिबे कि हार्डली हमरो ओडिसा रो 35 to 40% ऑफ द कंजम्पशन इज बीइंग मेड इन ओडिसा बाकी सब जिनस हमर नेबरहुड स्टेट रो आसुची आख पाखरे जहां भी स्टेट रहला वेस्ट बंगाल रहला बा एपटे आंध्र प्रदेश रहला फार ऑफ फ्रॉम माने गुजरात रो भी बहुत प्रोडक्ट आसुची
तो देयर इज अ ह्यूज गैप लाइक ए जो 260 सेतेबेले आई मीन केटीपी रा हमरो डिमांड थिला व्हेयरएज प्रोडक्शन थिला ओनली 90 एंड दैट डिमांड और प्रोडक्शन भितर जो गैपटा से गैपटा आगु को जाय कि आहुरी माने बढ़िबार अछि कोन पैना हमरो सेही हिसाब रे इंडस्ट्रीज आउ आसी नाहंती व्हेयरएज द डिमांड इज ग्रोइंग तो मु भी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स रे सेक्टर वाइज किछटा डिमांड भी मु शो करछि कि को को सेक्टर रे केमति केमति डिमांड अछि एंड बेस्ड ऑन दैट इंडस्ट्रीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन ओडिशा टू कैटर दोज डिमांड्स सो एठी देखिबे जो मझिरे जोडा अछि पर्टिकुलरली पीपी बेस हमर बहुत गुडे प्रोडक्ट अछि जोथरे हमर एठी कंजप्शन प्राय नाही ओनली टीक्यूपीपी इज वन सेक्टर ट्यूबुलर पंच पॉलीप्रोपिलीन जो बैग सब आसे ब्रेड पैकेजिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स पई सेथिरे हमर माने डिमांड आउ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट माने मैच करूची व्हेयरएज बाकी कोनोसी भी आपनकर सेगमेंट देखिबे सेथिरे हमर डिमांड इज क्वाइट हाई इन ओडिशा कंजप्शन इज क्वाइट हाई व्हेयरएज हमर बिल्कुल भी तार प्रोडक्शन नाही एंड दिस गैप नो डाउट द राफिया गैप टिके बे प्रोडक्शन बढ़ी छि 3टा यूनिट आउरी हमर प्रोडक्शन आरंभ करचंती बट एट द सेम टाइम द कंजप्शन हैज आल्सो ग्रोन अप नाउ सेथरु मु माने सेटा एंटायर जिंस रो थिला वर्तमान मु इंडिविजुअली गोटे गोटे सेगमेंट रो टिके टिके डिस्कस कर दोची लाइक ओवन सक जो हमरो सीमेंट पई राइस पई फर्टिलाइजर पई डीपी मिश्रा सर कहतले कि दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो आसला नो डाउट दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट बट Odisha being a large producer of cement, food grains भी ऐसी गलानी, and then polymer रो packaging polymer हमें जेहेतु आयोजन काफी बड़ा capacity एटी establish करची, तेनु this is the slide जोड़ा show करूची आपनकर कि वर्तमान bag रो requirement केते बा resin रो requirement केते and going ahead 25-26 वर्तमान 25-26 आपनकर already next year पे हमर माने एक गोटे प्रोजेक्शंस थिला सो अराउंड 11,000 मेट्रिक टन पर मंथ रो पॉलीप्रोपिलीन दरकार ए बैग गुडा को कैटर करबा को व्हेयरएज एज पर आवर एस्टिमेट ओडिशा भीतर रो प्रोडक्शन मे बी समथिंग अराउंड 1000 टन और 1200 टन्स सो माने ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड अदर स्टेट रो आसुची सिमिलरली आउ किछि प्रोडक्ट इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट लाइक आपनकर फर्नीचर हैला बा क्रेट्स हैला तार भी हमें किछटा कंजप्शन कोन हेई पारे एंड हमर कोन एठी माने रिक्वायरमेंट केते हेई पारे और कंजप्शन केते सेडा भी हमें कैलकुलेट करथिलु अपन देखि परिबे हाउस होल्ड फर्नीचर रे अराउंड 1000 टन 800 to 1000 टन्स रो डिमांड पर एनम एंड क्रेट फिशरी क्रेट पई इटसेल्फ इज 100 टन्स रो रिक्वायरमेंट पर मंथ सिमिलरली सेतेबेले माने ओवन सॉरी पीपी किट्स एंड मास्क पई हमें देखुदलु तार रिक्वायरमेंट ओडिशा इज प्रोन टू फ्लड्स तो सेथि पई हमरे रिवर एम्बैंकमेंट हुए एंड सेथिरे भी बहुत प्रकार प्रोडक्ट यूज हुए जोडा का ओवन चक्र तयारी एंड संगरे हमर जो कैनाल्स अछि कैनाल लाइनिंग गोटे दिया हुए प्लास्टिक्स रो कंपनी जदी आपण नॉर्मल कंक्रीट रो रखले बा खाली छाडी देले ताले बहुत पानी आपनकर वेस्ट भी हबो माने थ्रू सीपेज एंड सेकंड वन सेटू भांगीबार भी बहुत चांसेस थाए सिमिलरली माइक्रो इरिगेशन रो कथा जदी कहबे माइक्रो इरिगेशन ओडिसा रे बहुत नासेल स्टेज रे हमें एटी प्राय यूज करूने बट इवन इफ जदी 1% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड रे हमर माइक्रो इरिगेशन आरंभ हुए व्हिच इज वेरी मच माने बोथ फार्मर पई हमर स्टेट पई भी बहुत भलो कंपनी यील्ड बढ़िबो आपनकर अर्निंग फ्रॉम हेक्टर आपनकर बहुत बढ़ी जिवो सेथिरे भी अपन हमें देख परिबा जे होपिंग माने 14,000 मेट्रिक टन्स पर एनम हमर गोटे डिमांड जनरेट होची इवन इफ 1% कल्टिवेबल लैंड मु कहूनी कि एटा बर्तन करी हे जीवो संगे संग बिकॉज़ वी आर एट 0 या 0.1% बट टू गो टू 1% वी नीड सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट सहित हमको एडुकेट करिवार अछि डाउनस्ट्रीम फार्मर मानु को भी संगे नै कि आगु तार फायदा देखे कि आगु करिवार अछि सो दोज ग्राउंड वर्क शुड बी रिक्वायर्ड बट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दिस थिंग्स
Similarly, our milk production रे अपन देखि परिबे food packaging ओडिसा रे अपन सुनथिबे कि बहुत प्रकार सी फूड पैकेजिंग बालेश्वर जे हब सी फूड पैकेजिंग पई सी फूड पैकेजिंग रे अपन बहुत प्रकार माने पैकेजिंग यूज होची जोडा को फ्लेक्सिबल भी रहउची किछटा रिजिड पैकेजिंग रे भी रहउची डेयरीज हमर ओडिसा रे धीरे धीरे बहुत सब आसी गलनी सो ए सब प्रोडक्ट नाही आई वाज एस्टोनिश्ड कि लाइक वन प्रोडक्ट अपन देखुथिबे फ्लेवर्ड मिल्क रो जो पैकेजिंग पई जो बॉटल्स से बॉटल्स हमर आका पाखरे कोड तयार इट इज कमिंग ऑल द वे आइदर फ्रॉम माने दिल्ली या फिर गुजरात रो आस्तला सो यू कैन कंसीडर कि को बळी भाबरे फ्रेट हमें सेतरे माने अंतर एंड प्रोडक्ट रो प्राइस के हिसाब रे बढ़ी जाउथो जते बळे हम एते डिस्टेंस रो से प्रोडक्ट को मगौचे तो these are some of the sectors जो हमें करि परिबा या विषय भी मु कहली फ्लड साइक्लोन एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन पई सेथरे आपनकर टार्पोलिन एंड ये बैग्स यूज हो जोटा कि हमर बहुत बड़ गोटे कैलकुलेशन हम करथलो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 3000 टन्स पर एनम रो हमर रिक्वायरमेंट होता सिमिलरली आपनकर ब्लैक टार्पोलिन्स जेते बेले हमर साइक्लोन परे जेते बेले हम रिलीफ पई लोकन को माने गोटे भलो जगह रखिबा को जाय सेते बेले ऊपर आपनकर छात रे टार्पोलिन कवर दिया हुए तार मध्य हमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करूची मोस्ट ऑफ द टाइम रे 1000 टन्स रो एलडीपी एंड एलएलडीपी रो ब्लेंड करिकी जो टार्पोलिन ब्लैक कलर रो मोटा टार्पोलिन या जो ब्लू कलर देखाउची सेगुडा को कवर करिकी से माने ताको प्रोवाइड करचोंती तो बेस्ड ऑन ऑल दिस मुटिकेठी सेग्रीगेट करिकी केते प्लांट रो कैपेसिटी नो डाउट मतलब गोटे हाइपोथेटिकल सिचुएशन नै छी बट सेतरे अपन वेरिएशन भी आनी परिबे लाइक बेरिंग फ्यू बीओपीपी एंड स्पॉन बॉन्ड नॉन लाइक टीक्यूपीपी हाउस होल्ड आर्टिकल एथरे द प्लांट कैपेसिटीज कैन बी टेलर मेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली हमर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट आ लैंड रिक्वायरमेंट ए सब धीरे धीरे करके हमर चेंज हे जिवो बट आई हैव ट्राइड टू शो ए फिगर जोटा कि नॉर्मली इंडस्ट्री रे काफी लोग यूज करती लाइक फर्निचर आई हैव शोन 250 मेट्रिक टन्स पर मंथ रो कंजप्शन बट दैट इज ह्यूज सो से केस रे हमें 250 न जाएगी हमें गोटे छोटो 50 टन्स पर मंथ रो फर्निचर रो गोटे यूनिट हमें आरंभ करि परिबा सिमिलरली स्पन बॉन्डेड नॉन ओवन हला बा टीक्यूपीपी वेरी माने with a single machine we can produce around 30 to 40 tons of material per month so these are some products which can be made with the existing raw material which is available with us both at Paradeep and Haldia in that sense similarly other sectors like cast polypropylene box trap there are all like there are plastics gote bhaliya habare gote mane industry jothre apna very small like 10 tons to 15 tons per month ru nei ki per month 3000 ton 4000 ton तक प्रोडक्ट आपण बनै परिबे few lakhs रो आरंभ करी कि आपण माने hundreds of crore रो इन्वेस्टमेंट भी सेतरे अलग अलग प्रोडक्ट रे पॉसिबिलिटी अछि सो CPP box trap thermoforming and fluid board these are few segments जो थरे हमर एठी कोनसी भी प्लांट नाही एवं सेगुडा को हम एठी आरंभ करि परिबा the detailed study reports mo pakhare available achi machine manufacturer most of the cases re machine manufacturers are indian machines achi bearing few like BOPP and CPP jo thre हमको technology baharu ani padibo otherwise baki sabu case re हमरो indian machineries available achi machine cost ko bali apare apanଙ୍କର output asibo kete power consumption hobo apanଙ୍କର footprint kete all details are available with us so anybody interested we can guide them and I mean machine manufacturer सहित भी हम तांको सहित कनेक्ट करै परिबो ये पॉलीएथिलीन ऊपर बेस करके लाइक अपन देखिथिबे HDPE पाइप LL HM रो फिल्म लोटो मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग एगुडा को किछि प्रोडक्ट जोगुडा हमर माने तयारी करी हबो पॉलीएथिलीन ऊपर बेस करके पॉलीएथिलीन राइट नाउ अवेलेबल हल्दिया रे अछि बाकी ओडिसा रे हमर इंडियन ऑयल भी निजर गोटे पॉलीएथिलीन रो प्लांट मे बी 3 years down the line 4 years down the line हम पॉलीएथिलीन बनेबो so these products should be available is ताकू यूज करके अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनै परिबे एतिक थिला हमर पॉलीमर ऊपर लाइक पॉलीएथिलीन पॉलीप्रोपिलीन टेक्सटाइल भी जंती नंदन सर कहउतले कि हमें भद्रक रे गोटे प्रोजेक्ट आन जो टेक्सटाइल जोठी हमर 900 टन्स पर डे रो गोटे सीपी लाइन आसीबो जोथरु 300 kta प्रोडक्ट हमें बनै परिबा DTY FDY एंड पॉलिस्टर चिप्स जोथरु डिफरेंट टाइप्स ऑफ
products bani paribo. And these are some these are some investment sectors जो थे हमें सेतरे product बने परिबा ना apparel हला bedsheet हला yarns हला या पई हमें different types of माने input टाको यूज करी कि हमें end products एमती बने परिबा एवं आपण मन जदी देखुथिबे एबे ओडिसा रे ऑफ लेट हमर जो apparel sector ऊपर बहुत बड़ फोकस अछि बहुत बड़ ध्यान अछि आपण देखुथिबे बहुत बड़ बड़ apparel manufacturers ओडिसा को आसिलेनी आरंभ करलेनी तांकर काम so this is going to be a huge like industry आगु को जाएगी अपन देखो बर्तमान जॉकी टू आरंभ करी कि आदित्य बिरला फैशन देन वाइल्ड लोटस आउ आपनकर शाही एक्सपोर्ट समस्त निज निजर गोटे गोटे यूनिट ऑलरेडी चालू कर चलेनी एवं आगु को जाएगी समस्त एक्सपेंशन पई लागि चंदी कोन पई ना गवर्नमेंट रो पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स काफी भलो अछि हमरो टेक्सटाइल सेक्टर रे सो गोइंग अहेड आपण माने ए विषय रे भाई परबे कोन पई ना भद्रक इज क्वाइट क्लोज टू आपनकर प्लेस सेटू रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत भलो भाबरे हे परिबो से रॉ मटेरियल को यूज करी के आपण फिनिश प्रोडक्ट को आगो तरफ लाइक कलकत्ता इज ए हब फॉर these apparels and आपनकर होशियारी सो apparel होशियारी पे जो मिड माने जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दरकार सेटा बने की भी आगु को आपण दे परिबे दे आर टेकिंग ऑल द वे फ्रॉम साउथ now there are few drivers for textile and apparel industry in India मुता ऊपर डिस्कस करबुनी कंपनी समझ जानचंदी बहुत अधिक ग्रोथ वर्तमान टेक्सटाइल एंड apparel ले चलची बिकॉज़ ऑफ लाइक अर्बनाइजेशन एंड वुमेन वेयर आउ ट्रेंड्स नुआ ट्रेंड्स आछी एंड देन हमें सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक टेक्निकल टेक्सटाइल्स रे भी जीवा को चाहूचे तो नो डाउट टेक्सटाइल एंड apparels in India is a growing segment and exports भी काफी एथरू अधिक होची दो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स राइट नाउ with this part I come to the like कौन investments हे परिबो just a snapshot आपण माने आउ दरकार हेले further जहाँ भी information दरकार you can contact me detailed market study रू नै कि machine manufacture cost product कौन बनी परिबो everything we will be able to help you out and provide you now मु बतन आछि incentive part ऊपर which is most important plastics industry को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एज ए प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर करछि सो प्रायोरिटी सेक्टर रे आपनकर जो इंसेंटिव दैट इज मच बेटर देन द नॉर्मल सेक्टर सो प्रायोरिटी सेक्टर रे कौन इंसेंटिव हो सेटा मु माने आज पर आईपीआर 2022 मु लिस्ट आउट करछि आपनकर जानिया पई सो मोस्ट इंपोर्टेंट इज कि लैंड तो ठीक अछि गवर्नमेंट जदि तांकर लैंड बैंक रु दोची ताले कंसेशनल इंडस्ट्रियल रेट रे देबे अदरवाइज आपन निजरो लैंड रे इंडस्ट्री आरंभ करि परिबे स्टैम्प ड्यूटी रे एग्जेम्पशन अछि दैट इज वन point number 3 the capital investment subsidy that is the most attractive thing like 20% on plant and machinery that earlier there used to be a cap ebbe ta upre konosi cap nahi no cap investment plant and machinery capital investment upre 20% subsidy आपन को जोटा कि आपन को फ्रेश मैनर रे 5 वर्ष रे दिया हो 4% each month आपन जेबेटो कमर्शियल प्रोडक्शन आरंभ करिवे आउ दुटा मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस होची इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आपन को 2 टंका लेखाए पर यूनिट आपन को कम दबा को पड़िबो जदि आपन प्रायोरिटी सेक्टर रे करचंती एंड ड्यूटी आपन को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोटा लगे ड्यूटी आपन को 100% एग्जेम्पशन 7 वर्ष पई फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन दीज आर फ्यू जोटा कि हमर प्लास्टिक इंडस्ट्री को बहुत दरकार कारण रॉ मटेरियल परे द सेकंड वन दैट इज मोस्ट माने अधिक हमर रिक्वायर्ड होची दैट इज हमर इलेक्ट्रिसिटी ताकू छाड़ी कि अपन जदी आरई ऊपर काम करतों रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर ता पई भी इंसेंटिव अछि प्लस द पॉइंट नंबर 7 होची आपनकर एसजीएसटी रिइंबर्समेंट नेट एसजीएसटी रिइंबर्समेंट आपनकर 100% अप टू मैक्सिमम आपन जो प्लांट एंड मशीनरी रो कॉस्ट थिबो तार 200% मनकर आपन प्लांट एंड मशीनरी 5 कोटी रो लगाले ताले सेटा आपनकर 10 कोटी पर्यंत नेट एसजीएसटी रिइंबर्स करिवो गवर्नमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
that is defined there IPR 2022 अनुसार ताकू छाड़ी की हमरो बहुत प्रकार अलगा प्रकार भी माने इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज दोची एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी तापरे एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब्सिडी गवर्नमेंट आपन को माने एनकरेज करूची आपन जेडएलडी प्लांट लगांतो जदी आपनकर सेमति किछि माने पर्टिकुलरली टेक्सटाइल कथा कहले आपनकर किछि प्रोसेस रे आपन को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला प्लांट लगे माने रिक्वायर्ड अछि ता पई भी गवर्नमेंट से आपन को कोन करूची बहुत प्रकार इंसेंटिव दोची कैपिटल सब्सिडी भी दोची that is this is as per IPR 22 जे कोनोसी आपनकर प्रायोरिटी सेक्टर रो जदी इंडस्ट्री रहला तांकू एटा मिलिबो ताकू छाडी की गवर्नमेंट अपैरेल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल ऊपर गोटे स्पेशल पॉलिसी करिछि सेठी भी से कोन करछि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपन दोची 40% प्लांट एंड मशीनरी तापर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सब्सिडी आपन वर्कर रखिबे माने जो माने स्टिचिंग करी माने मनकर अपैरेल आपन बनौचंती अपैरेल बने पले आपन स्टिच करेबे मशीन ऑपरेट करबा को आपन लोक रखिबे तांको पई पर मंथ से माने रिइंबर्स करचंती मेल वर्कर को पई 5000 टका फीमेल वर्कर को पई 6000 टका 5 वर्ष पई दैट इज ह्यूज माने आउ कोर्स जाकर आपन को बळे बारे मिलिबो नै ताकू छाडी की बाकी मार्केट डेवलपमेंट आउ आरएनडी एसजीएसटी रिइंबर्समेंट बहुत प्रकार इंसेंटिव अछि एज पर आईपीआर 2022 सो one of the best incentive I can tell in terms of priority sector pai and apparel and technical sector pai government of Odisha provide karuchi okay so these are the incentives jota government provide karuchi ame kon kar paribu at Indian Oil ame apon ko प्रोजेक्ट एंड मार्केट स्टडी पई कोन कोन करि परिबे ता विषय हमें हेल्प करि परिबु प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन पई हमें हेल्प करि परिबु मशीन मैन्युफैक्चर सहित आपन को कनेक्ट करि परिबु एंड देन बैंक्स तांको सहित भी कनेक्ट करिबु मशीन कमिशनिंग रॉ मटेरियल सिलेक्शन प्रोडक्ट टेस्टिंग या पई हमें हमर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर सहित आपन को कनेक्ट करि परिबु इवन सीपेट इज देयर they can also do and for OEM approvals like किछि प्रोडक्ट दरकार जोडी आपन को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर टू अप्रूवल दरकार ता पई भी हमें आपन मन को सपोर्ट प्रोवाइड करि परिबु सो एटा हमर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर जोतरे हमर पॉलीमर ऊपर आपन जे कोन प्रकार टेस्टिंग एंड अदर रेसिपी डेवलपमेंट या कुछ नुवा स्टडी करिवार अछि आपन एटा करि परिबे दिस इज एट पारादीप एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि केबे भी आपन को चांस मिलुची यू लेट मी नो एठी कि आपन जाई परिबे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स अछि कोन होउची सेठी आपन देखि परिबे आपन कहले सेटा हमें अरेंज करिबो सो विथ दिस आई कम टू द I mean, I conclude the presentation here. We can very well discuss कि किछि यदि अपन मनकर प्रोडक्ट अछि को विषय अपन डिस्कस करिवा को चाहछंती we can very well discuss. Thank you. Thank you, sir, for the nice presentation. Sir, और निजर केते गोटा ऑब्जर्वेशन अछि सर जे हमर मयूरभंज रे ଆମର ଗୋଟେ bad experience ଅଛି because of the closure of mining mineral based industries ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା sir around 2008 9 10 ଏଇ ସମୟରେ mineral problem ହେଇଥିଲା ହବାରୁ जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गुडा मयूरभंज रे थिला ସେମାନେ ଆଉ minerals raw materials पाइले नहीं तेणु they were forced to close down. So आम कहवा कथा होउची जे केते बेले गवर्नमेंट रो पॉलिसी कोवर्ड को जीवो तार किछि गारंटी नाही एबे गोटे एंटरप्रेन्योर पई इशू होउची जे से बैंक रो आनी की निज घर रो जहा इन्वेस्टमेंट अछि सेगुडा लगेई की गोटे बिजनेस सेटअप करूची जदि ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट तार पॉलिसी चेंज कर दे कि गोटे यूनिट को बंद कर दउची बा बहुत बड़ा यूनिट को बंद कर दउची गोटे तार ह्यूज इंपैक्ट इकोनॉमी ऊपर आ एम्प्लॉयमेंट ऊपर पडुची तेनु एटा को माइंड रे रखी की एबे मो भितर गोटे क्वेश्चन आसुची जे हमें फर्स्ट इनिशियली गोटे विजन हमें प्रिपेयर करबा दरकार जे हाउ टू यूज प्लास्टिक सस्टेनेबली माने प्लास्टिक इंडस्ट्री रो सस्टेनेबिलिटी को प्रोडक्ट गुडा फ्यूचर रे यूज होबा को अछि को गुडा
ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ କି ୱିଡ୍ର ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଇନ୍ ଦ ହରାଇଜନ୍, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜାଣିକି ଯୋଉଗୁଡା ସଷ୍ଟେନେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ସେଇଗୁଡା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସାର୍। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ within a crore, 2 crores, 3 crores, 5 crores ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିକି କୋଉ ଟାଇପ ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଗୁଡା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଗୁଡା, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜନ କ୍ରିଏଟ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ରେଡି କରିପାରନ୍ତେ ଆମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର୍ଡ କଥା ହଉଛି ସାର୍, ଯେ ଯୋଉଗୁଡା କମନ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ସେଥିରେ ମାର୍ଜିନ ର ପ୍ରେସର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଇଟମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇପାରେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁସେଜ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଥିରେ ମାର୍ଜିନ ର ପ୍ରେସର ବହୁତ ବେଶୀ ନଥିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭ କରିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବେ ସାର୍? Can I answer this? Please sir. Let me introduce myself. My name is Nursanchal Mahapatra. I belong to Berhampur. ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ଖଲିଗଡ଼ ପାଖରେ କୁଶଡି ପ୍ରଶାସନ। 1992 8th October ରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। I am having the ecosystem throughout the world. I am basically a scientist. I am making robots for the inline inspection of the oil. Sir, you are not audible. You are not audible. Please unmute yourself. Please unmute. Not audible, sir. It's mute. Sorry Yes, about yes. that. It is okay. Am I audible Yes. now? Okay. Yes. My name is Nursanchal Mahapatra. I belong to Berhampur. ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ଖଲିଗଡ଼ ପାଖରେ କୁଶଡି ପ୍ରଶାସନ। 8th October 1992 ରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ and throughout the world. Okay. I am basically a scientist and making robots for the inline inspection of the oil and natural gas pipeline, midstream. And in the downstream, I'm working with all the CGD companies, city gas distribution companies like IGL, CUGL, Green Gas, Green Gas, and lot of. There are 72. ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ସୋତା ବାବୁ। That is true. You are telling that there are policies which can be changed by the central government or the state government at any point of time. But IOCL, according to me, is an independent body. It's a PSU. Okay, they are having their own policies, and the central government cannot all of a sudden overnight they cannot change it. As for me, whatever I have seen throughout my career of 30 years 4 months, 5th of January 1995 I started my career, and by another 2 days, means 1 day, it will be 30 or 4 months. I've been working with GAIL, IOCL, BPCL, HPCL, and GIGL, GITL, all these PSUs, and Reliance, and British Petroleum, Syncrude, and then Aramco, there are so many others. This industry is a sustainable industry, and the demand is very high. If I'm not wrong, from here we can make MDP and HDP pipe also, apart from PVC. The MDP pipeline is required for the CGD companies, city gas distribution companies, because from the riser it goes through the GI pipe, galvanized iron. Otherwise, in the inside the soil, which is 1.5 meter, 1.25 meter, or 1 meter down the beneath the land, they dig the pipe through HDD, horizontal directional drilling, and they put this 32 mm, 63 mm, 90 mm, 120 mm, 180 mm, and the geographical GA
And geographical area coverage is right now 96%, which is being awarded after the 12th round by the PNGRB. The demand is very much high because if you leave out apart the service line, which is around 32 mm or 20 mm, see, lakhs and lakhs of kilometers of MDP is required, and few of the suppliers are there. Many suppliers are not able to meet the demand of it. So coming to that about the ecosystem, for I need the technology. Getting the investors, setting up their plants is not a problem. Selling the product is not a problem at all. There is high demand for all these things. Okay, plastic is in high demand. Mayurbhanjre ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉଟା କୋଟିଏ କୋଟି କିମ୍ବା 5 କୋଟି ଭିତରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, I do not want them to invest. I want a bigger player to invest and give them, outsource them these works so that their risk is disseminated drastically. So they do the work, get paid for it. If they invest by taking the mortgage, then in case there is a problem, the government changes the rules, they are going to be in the soup. Okay. All these local people will be awarded, the entrepreneurs who are present over there, but from a bigger company, those who are investing in thousands of crores. And because everything cannot be done by a bigger company, they need local support. And those supports will be given on a particular payment term, maybe 30 days after delivery or whatever the outsourced work is being done according to the SLA, service level agreement, those will be honored. So this factor is now come down drastically. They don't have to invest as much as they would have invested if they would have directly participated into that. They will get all the work. If they are capable of executing a work of 5 crore, then we'll give them 10 crores. Not a problem at all, because the risk is all minimized. And periodically on a RA bill, okay, running account bill, they are going to get paid for that. Whatever they deliver, they are going to pay. I had been to Odisha from 5th of February to 23rd of February. I wasted my 18 days. I met with a lot of IS officers, and but their monosthiti nahi tha kaam kariyako. Because of JNAI is coming in a big way, I was there to handhold the student of all the universities, those who are coming out of that, passing out from the colleges, to train them. Because I have made a group called as think tank. Bhaina achandi sithre. Amaro Dhananjay sir bhaina achandi se group. All the PSU heads, leaders, civil servants, entrepreneurs, doctors, engineers, professors, scientists, Supreme Court senior advocates, judges, all are there in that group. Some 318 people are there. And throughout the world, only in India, throughout the world. All the biggest like E.S. Ranganathan, then Pawan Kumar ji, Sunil Ben, all these are from petrochemical industry, having 35, 37, 40 years of experience in that. And they are the right people. I'm writing, I have written down everything. Okay, I have to, because Bhaina mate कहले जे ओडिया रे कथा बोली, so 90% लोग तो हिंदी ओडिया इंग्लिश रे कथा होतंदी, अधिकार लोग डर के आसलेनी, बोले आस्तान से सुधान करतांदे. मैं कहले okay, I'll write down the crux and give it to you. So by 8:30 p.m. I have to write down on a WhatsApp. In that group I'll post, or Bhaina post कर दिला और बढ़िया हो, because he is the subject matter expertise. My expertise is not in that. SIPET I know, because I established in the 80s, end of 80s, maybe in the 89 or something like that, if I'm not wrong. More Diborso Sana Manoj Kumar Bera se OPTCL Ratsi GMIT. He got selected in that SIPET, Central Institute for Plastic Engineering Technology or something like that. CIPT, if I'm not wrong. At that time, I was thinking, what exactly is the usage of plastic? I don't know. But over a period of last 3 decades, I can see the usage of plastic has drastically increased compared to the usage of iron. Now, there is a project in Saudi. They, in place of iron, the pipes
for the oil and natural gas and water, they use plastic pipes. Welding is very easy. Fusion welding you can do in place of butt welding. Then NDT is not to be done. Okay, non-destructive test. The price of non-destructive test is obnoxiously high. There are 5 methods: AUT, MUT, LPT, MPT, and then NDT and all these things. Okay. By robots also you can do. And flushing these pipes is very easy. And the longevity, you don't have to do all the CP tests, cathodic protection, then inside inspection of the oil and natural. The life of the pipe is very high. So one project was successfully delivered. Now, all this oil and natural gas throughout the world, only India is only having 60,000 kilometers, only 0.96% of the total market of the world. Only 0.6%. 99.4% market is throughout the world. Now, these people are going to invest in such a way that then ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ. Okay. The only thing is railroad connectivity. If you are doing a siding from 5 kilometers away, the station is there. You have to do a siding so that the train can come up to there. All this Concor, Gateway Rail, Pristine Logistics, they are going to take these materials, the finished goods. Then trucks, trailers will come to pick up the things. Then the port is 3 kilometers away. So it can be exported. So we have to work in such a way that I need technology. Apart from that, everything is set. In that group, once I write, people will show interest and they will come down to you with folded hands. Because I belong to Odisha. I was born in Odisha in Berhampur. That's why there is a soft corner. But the people who have come out of Odisha are doing very well. But those who are staying over there, खाली खाइबे मु कहितली से गोटे 10टा न्यूज चैनल आस्ते खाली खाइबे सोइबे हगिबे, that's it, and repeat. If you tell them to work, only 95% people will be ready to do the work. The people who are sitting over here are the karam yogis. That's why they are sitting for in the weekend for 1.5 hours, 2 hours. Okay. But how many people will show that interest? You have to see that. You have to encourage the people of Odisha to come out of that mindset कि कोई आसी गोटे आउट कर दो बोली. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କହିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମାଗତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ. How many people have utilized that those sentences because he saw that it's a କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡିବ ବୋଲି. I work for 22 hours a day. ଖଇନି ପଡୁଛି so that my brain is active. This is the place where I live, so I have to take care of my health. So 1 hour of exercise, 1 hour of sleep, that is enough. You have to empower yourself. Your brain has to be controlled. 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ନଶୋଇଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଖରାବେଳେ ଭାତ ମାରି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ 3 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅକର୍ମଣୀୟ ହେଇଗଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି. At the age of 50 to 53 ଅକର୍ମଣୀୟ ହେଇଗଲେଣି, କାହିଁକିନା ଦିମାଗ में भूसा भरा हुआ है. They do not want to work. ନାରାୟଣ ଆସି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା କୃଷ୍ଣ ଆସି କାମ କରିବେ. You have to do the work. If the people are mobilized enough, encouraged enough, being given the right platform, they can do very well. लोक I think Nrsinga Babu, sir DP Mishra କହୁଛି. sir କୁହନ୍ତୁ. ନମସ୍କାର sir. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ସାର୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅସମ୍ମତ. ଗଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ସରିନି ଆହୁରି. Let me just add that finishing line, then you will ସମର୍ଥ ହେବେ. The people who are staying outside Odisha and 5% of the people who are staying in Odisha are the number 1 in the world. प्रधानमंत्री को 2 जन जाक सलाहकार ओडिसा शक्तिकांत दास पीके मिश्र जो माने ओडिसा रो बाहर का आछंती की काम करछन आज्ञा ऑल ओवर वर्ल्ड. मु जति की प्लम्बर नउची all are from Odisha in the construction industry because they are the best of the best. Those who are dedicated and working hard, they are number 1. Nobody can beat them. That is for sure. I can mark on it because I have been seeing that for 30 years. But जो माने करू नाहंती सेमानन को हमको धक्का मारिया पड़ियो काहे कि ना हमें जीडीपी रे 23rd position अछि सर मिश्र. We have to bring down to the 3rd position, then we have to push the people of Odisha to do work.
excuse करिवे टिके हमें deviate हे जाउछु हम Yeah. Now, point coming to the points of your plastic part, I just need the technology help of CPET and the people who are in the industry. Apart from that, everything can be done. With this, I'm finishing. Debu, again Debu, तमे जो प्रश्न पचारिला, हाँ they are justifiable. ता छड़ा आउ गोटे competition अच्छी plastic industry रे, there is something called interplastic competition. गोटे plastic आउ गोटे plastic को replace करिवा. But मु जोटा कहली जे CPET knows these things very well. CPET को देइकिरी तमे project report आउ identification of the product in various investment zone रे 5 कोटी हैला 10 कोटी हैला बा 2 कोटी हैला, they know everything, so they can give you dossiers of different investments. तमे तापरे गोटे entrepreneurship development program कराओ करिकरी आम अरविंद जो कहले से भाया एक्सपर्ट मान को डाकिकी सहित इंटरेक्शन करा से माने तापरे से बॉम्बे गुजरात टिके प्लास्टिक इंडस्ट्री जो सेंटर सब से देखाओ तापरे the things will automatically fall in line. I don't have any problem, and this can be done. Bombay re dita organization achanti, gote hochi Indian Plastic Institute, ଆଉ ଗୋଟେ hochi Indian Plastic Manufacturers Association. ଏ ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ contact ରଖିକିରି then you can go ahead with the help of CPET. तमे किंतु डॉक्टर नायक को इन्वॉल्व करियो एटा हला मोर लास्ट एडवाइस एक्चुअली आउ किछ नै Sir, good evening. Ranjan sir, I am audible, Ranjan Banerjee. yes you are audible sir. Yeah. Sir, I have a question. You have mentioned about so many furniture, pipe, etc. day-to-day basis रे बहुत किछि हेई परिबो. The question is, ame jetebele, and these are the downstream industries with respect to polyethylene or polypropylene, right? Even also you said that the optical fiber cable, even power cable, when we talk about PVC granules, etc. Now, आमे पारादीप किंबा हल्दिया रे एते बड़ो प्लांट थिवा सत्वे भी कहीं कि गोटे भी PVC ग्रैन्यूल मेकिंग कंपनी ईस्टर्न जोन में हेई परुनी. Is there any problem on that? I just wanted to know. Other things are all related. आपण जो extrusion process देखेले, there it is coming down and then getting heated and getting into manufacturing as per the die which we are providing. Now, I have that simple question. जे आमे कहीं कि गोटे PVC ग्रैन्यूल इंडस्ट्री आमर इठी जेंति KLJ बा कल्पना प्लास्टिक्स सिलवासा रे हेई परची, दामन रे हेई परची, आमर इठी करबेरे कोन असुविधा जे एथि रॉ मटेरियल IOCL वर्तमान अवेलेबल माने इन हल्दिया as well as Paradip? That's the question to Mr. Aurobindo Sahu. नै आगे मु कहूची आपनकर PVC neither in Haldia nor in Paradip still available. जदि IOC जाए they will make PVC. PVC आपनकर nearest point होची Kadalur in Tamil Nadu. से प्लांट ता मु बसई थिली PVC प्लांट Kadalur रे. So Yes. PVC हेइनी because they have not gone for the PVC as a product in the petrochemical complex. बुझले ता Yes, sir, I would like to add here. आमे जो वर्तमान जो नुआ प्रोजेक्ट हमर MOU साइन हेची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सहित 61,000 crore जोटा धनंजय साहू सर कहतले सेथिरे ऑलरेडी PVC रो प्लान PVC has been taken into consideration in that project. And second one, we are coming up with a PVC 200 KTA at Baroda.
बरोडा ऑलरेडी एडवांस स्टेज रे अछि एंड पारादीप माने प्रोजेक्ट रे कंसीडरेशन अछि सेते पीवीसी पई 600 KTA रो थैंक यू सर बाबू देबो ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା थैंक यू थैंक यू नमस्कार ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार सर देवबाबू आपण जो ओपनिंग रिमार्क रे आपण कहले कि तीनटा जिंस कथा होतले गोटे हला रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट कछि हठात करी बंद कर देबनी आपनकर मिनरल सहित आपण कंपेयर करतले एज पर एज माय नॉलेज mineral and polymers are two entirely different segments polymer रे गवर्नमेंट रो कोनची कोन मु जानि बारे मिनरल आपनकर माने those are based on auctions and government policies okay पेट्रोकेमिकल ले से बलिया किछि नाही कंट्रोल ओके गवर्नमेंट जस्ट कैन डिक्टेट कि हमें काली के एटा बिकिबा बा न बिकिबा करेक्ट सर मु एथि पे कहितली सर जो मझिरे प्लास्टिक केते गुडा थिन प्लास्टिक जो गुडा बैन हे गला सर सेति पई ता ऊपर को मु आछि सर कहितली सर सेटा हां SUPs सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर बैंड स्टिल बैंड सेटा एवं आज पर हमर CPCB आमे डिफरेंट लेवल ऑफ माने आज producer of plastic material and user of plastic material brand owners समस्त मिसी की सेमानकर obligation like extended producer जो हमर EPR obligations अछि ताको सेमान को मानिबा को पड़िबो जहां भी हमर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल हिसाब रे आसुची ओके सो ताको हमें adhere करि परिबा एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स भी बनै परिबा इट्स नॉट ए बिग इशू दीटांग पैरेलली आपनकर चली परिबो No, it is not a problem. Problem is that you need to identify right kind of product. So no need to go what is that which is low hanging fruit. So you have already said right thing, Debabu. We need to select mane karantu apanakar belt hela metal belt, right? Seti apanakar mines achi, seti apanakar metal achi. So there, what is that plastic product which is being used in mines? मने को तो जियो टेक्सटाइल रे आपन को 7 मीटर विड्थ थेला 9 मीटर विड्थ थेला पॉलीप्रोपिन पॉलीएथिलीन की पॉलिस्टर जियो टेक्सटाइल फैब्रिक यूज हुए कैन यू डू दैट लोकली दैट इज नंबर 1 नंबर 2 गोटे VCI फिल्म यूज हुए वेपर करोजन इनहिबिटर बिकॉज़ मेटल्स आर सब्स्टिट्यूट टू corrode so can you there is a VCI film which is used can you produce locally that so that setu amar normally kon huଏ everything is exported from outside through ports so they use lot of VCI film जोटा कि हमरो we cannot say that is a commodity kind of product they are all specialty kind of product जो थे कि हम technology as महापत्र बाबू अब नृसिंह बाबू कहले कि technology is the key तेणु से भाया प्रोडक्ट गोटे दिटा कहली आउरी देयर आर लॉट ऑफ वी कैन डू दैट गोटे थिन वॉल मोल्डिंग जो ये अरविंदो कहले जे आम ओडिसा रे जतक पैकिंग होची फॉर आइसक्रीम टू नै कि हमर स्वीट्स नै कि एगुडा सब बाहर आछि कलकत्ता कलकत्ता टू कहीं आसीबो बिकॉज ग्रान्युल जीवाटा गोटे गाड़ी रे 26 टन जाए ग्रान्युल से प्लास्टिक आइटम पठेबे तार 1/5 जीवो कारण से गोटा लाइटर वेट आउ ऑलमोस्ट इट इज डिफिकल्ट टू पैक इट टाइटली तो से भलिया जिनिस जोटा कि मन करंतु आपनकर ओवरहेड टैंक हे गला जो रोटोमोल्डेड टैंक 500 लीटर टैंक 1000 लीटर टैंक से टैंक टा काई कलकत्ता रु आसीबो एसिटी एठी unnecessarily transportation cost हमरो जो कंज्यूमर माने देबा पड़ुछि से माने कंज्यूमर ही पेइंग so this kind of product needs to be identified मु दितियाटा कहला गोटे कथा जे हमरो पारादीप रे वर्तमान टॉल्यून आछि टॉल्यून इज ए इंपोर्टेड प्रोडक्ट टॉल्यून रु हमरो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट तयारी करी हो बेंजीन डेरिवेटिव तयारी करी हो जोटा कि हमरो जो मन करंतो हमरो स्किन केयर परफ्यूमरी यूज होछि गोटे क्रेसल गोली गोटे प्रोडक्ट
এটা ଟିକେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 crores ପ୍ଲସ୍। ସେଥିରେ ଆମ ରିସୋର୍ସିନଲ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେସଲ ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମଙ୍କର ମେ ବି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମେ ବି କେଜିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ, ବଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ 2,000-3,000 rupees per kg। ସେଇଭଳିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଯଦି କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ it is not that CPET can only help, it is that you need to develop your own process। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିଜଙ୍କର ଯଦି you can tie up with somebody, some ଯାହା ପାଖରେ ପାଇଲଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ପାଇଲଟ ରିଆକ୍ଟର ଅଛି। ଆମ ଡେକାନ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଡେକାଲ କେମିକାଲ, ଭାଇଜାଗରେ ଡେକାନ କେମିକାଲ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ around 200 ରିଆକ୍ଟର ଅଛି। And they don't produce anything for their own company, they produce products for others। ବୁଝିଲେ କି? ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ once you develop, once you have proof of concept, you can scale up। ଆଉ number 2 ହେଲା, any business you cannot 100% rely on government incentives। ହେଲା, ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି close by, that needs to be first ascertained whether it is helping us। We cannot produce something we can sell at Mumbai, or if it is not that niche market, ଯଦି niche product ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ all globally supply କରିପାରିବା। If it is a common kind of product, then definitely we need to sell nearby। Government incentives also, this is just a filler, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ encourage କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ କି? Temporarily we should not depend on them whole life cycle of the investment। मन करो तो 25 वर्ष आमे कहते जे 25 वर्ष जेकोसी इन्वेस्टमेंट करू तार लाइफ होला 25 वर्ष 25 इयर्स। सेटा निजे सस्टेन करिया पड़िबो, निजे मार्केट गार्नर करिया पड़िबो, निजे प्रॉफिटेबली देखिया पड़िबो। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मु किछ कहबाकू चाहे। मो ना सत्यव्रत मिश्र, मु एक्चुअली बिलोंग करे राउरकेला बर्तमान मो मयूरभंज मो घर। से मु जानिया को गोटे जिनसे चाहूली थ्रू आउट द कैरियर। एक्चुअली मु सीपीटीएन 95 पास आउट सीपेट भुवनेश्वर रु। आउ डॉक्टर नायक मो बॉस थिले। आउ सेते बेले आउ तापरे मु आईपीसीएल रे गोटे वर्ष थिली। तापरे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री आईआईपी रु तब मु पढ़ी कि तापरे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री लास्ट 29 इयर्स मोर एक्सपीरियंस। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री अपन जानथिबे फिल्म इज द मेन इंग्रेडिएंट। फिल्म पैकेजिंग फिल्म एंड स्पेशली पॉलीएथिलीन फिल्म, पॉलीओलेफिन फिल्म जोटा हम यूज करू पीपी एंड एलडीपी एलएलडीपी। अनफॉर्चुनेटली जोटा आपण एबे अरविंद बाबू कहले जोटा एबे बैन अछि हमरो सिंगल यूज प्लास्टिक्स, बट एबे पर्यंत मतलब माने पूरा बैन किछि है नहीं तो पर्यंत इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव्स। ओके, people still depend on pouches, means carry bags, and से जिनसटा एमिति जोटा कि तार अल्टरनेटिव किछि नाही। जदि अल्टरनेटिव अछि कपड़ा बैग अछि जोटा कि हमर प्लास्टिक इंडस्ट्री पे बहुत बड़ गोटे सेटबैक। जदि समस्त कपड़ा बैग यूज करंती बा अलग किछि यूज करंती ताले हमर बहुत बड़ मार्केट गोटे डाउन जाउछि चली जाउछि। तेणु ता पई आमे बहुत 10 वर्ष 12 वर्ष रु आमे बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड एडिटिव्स ऊपर बहुत किछि काम कलुनी चली से गुड़ा भी बहुत किछि डेवलपमेंट्स भी हेछि। डायरेक्ट फूड कांटेक्ट तो मु पैकेजिंग इंडस्ट्री माने मिल्क फिल्म आउ एडिबल ऑयल फिल्म रो तो बहुत किछि मु करिछि। किंतु मु जानियो को चाहे आईओसीएल रो एते दिन तो पारादीप रो आसीला परे आउ सिपेट भी एठी रहला परे किंतु ओडिसा रे पॉलीफिल्म को देखियो को चाहे कि किछि बहुत बड़ गोटे डेवलपमेंट एबे पर्यंत हेई पारने। बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबिलिटी ऊपर किछि सेमन एबे पर्यंत किछि बड़ स्टेप नहीं पारना। एटा गोटे बहुत बड़ सेटबैक आम पे जे कि कैरी बैग्स इट इज स्टिल
अंडरस्टूड कैरी बैग बदल रे आउ गोटे बड़ सेटबैक भी गोटे मिलुची जोटा कि नॉन वुवन फैब्रिक बीइंग ए 100% पीपी समस्त सेटा को यूज करचंती आ कहउचंती एटा को फैब्रिक बोली तेनु जदि सेटा हबो पीपी जदि यूज करा हबो ताले पॉलीइथिलीन भी यूज हो आ जदि पॉलीइथिलीन यूज हे परनी तारो किछि गोटे अल्टरनेटिव आसु तेनु एटा गोटे बहुत बड़ स्टेप जोटा कि आपन को समस्त को नबा दरकार आ मु भी सेतरे माने बहुत इंटरेस्टेड कि बायोडिग्रेडेबल आउ कंपोस्टेबल पॉलीमर को नहीं के आसीबा ताकू सेटा को इंट्रोड्यूस करेबा गोटे स्टेट लेवल रे ताकू इंट्रोड्यूस करेबा जोटा कि माने स्टेट लेवल रो कोनसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन ताकू माने प्रमोट करू सो दैट एवरीबॉडी विल यूज इट ओपनली कि बायोडिग्रेडेबल हमें ये होचो दिस इज द ब्रांड एंड वी कैन यूज इट सो ए बेले किछि गोटे कॉलेज सेटा गोटे बहुत बड़ जो हमर गोटे वैक्यूम हे जे सेटा क्रिएट हमें करि परिबा सेटा फिल अप करि परिबा सत्यवत आपण भी इथरे यू आर इन्वॉल्व इन दिस फील्ड सो मेनी इयर्स या तो आपण जानती biodegradability is not a new subject. Okay. Yeah, of course. It has been discussed since ages. Yeah. So why it is not being commercialized? Also, there is a reason. Okay. Whatever you do, if you do scientifically, then only it will sustain. आपण बायोडिग्रेडेबल कहिबे ताको माइक्रोप्लास्टिक छोट छोट प्लास्टिक आपनकर सॉइल वाटर रे जाई कि सी रे ये हो इन्वेस्ट हो so that is not so it is not matured. See, why if there is a matured industry and there is a economics, then definitely it will grow. So no need to go into research kind of thing, which is like in moon and India. So in those cases, I would prefer it should be PLA based. For example, Balrampur Chini in UP. They are now coming up with PLA-based polymers, polylactic acid, that is sugar cane. So they are basically a sustainable product. Those kind of products are really possible. That is COP. That is. So we can talk in a different forum. You get in touch with me. I think Debabu mo number ta tamu tige de debe Satyavata. But in this forum, ओडिसा रे आमे टिके लेट आसिले बुझिले ओडिसा रे आमे आसिले 2019 रे हमर प्रथम पॉलीमर प्लांट आसिला आपण देखंतु हल्दिया केबे आस्तिला हल्दिया पेट्रोकेमिकल केबे आस्तिला हल्दिया पेट्रोकेमिकल अर्ली 90s हां केते वर्ष पर लागिला जे आपनकर वर्तमान कलकत्ता रे पॉलीमर इंडस्ट्री केते इकोसिस्टम डेवलप होला it takes ages. So when we started late, then definitely it may not be 25-30 years down the line. Maybe 10 years down the line, we'll also see similar kind of development in also Odisha. That is my conclusive, And another thing, apart from pipe industry and say woven sacks, which is nicely done in Odisha, the development is really in huge quantity, in huge. People are really getting into it. So apart from these two, other industries which been displayed, I think Aurobindo Babu jo goda display college se goda PPT re बहुत कम से गुडा डेवलपमेंट एबे पर्यंत हेछि मु मयूरभंज को परे आछि वर्तमान माने कटक भुवनेश्वर कथा कहूछि खोर्धा कटक भुवनेश्वर ए जो इलाका रे भी हमें जो करिछु इवन बालेश्वर रे भी ए दी तीनटा सेगमेंट छोड़ा आउ बेसी किछि आउ हेई पारेनी माछ जाल ए गुडा हेई पारुछि बाकी छि से गुडा भी बाहरु आछि फिलामेंट्स तनु मोनो फिलामेंट आउ ए इंडस्ट्री भी बहुत डिले हेछि तनु कोन पे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट the investors are there and people are ready to invest outside in Odisha, but not in Odisha. So what is the reason behind it? Have you ever gone through it? See, polymer is basically जोड़ा आपण देखुथिबे this is a mushrooming kind of industry. आपनकर either it is close to consumption center मन करंतु कलकत्ता हला कि आपण हैदराबाद हला कि आपण दिल्ली हला Mumbai hela close to the consumption center they mushrooms. बुझले कि काहे कि ना
upon either transportation cost is a big element. Upon taku jete reduce karibe and close to consumer have tale upon sustain karibe. Right now either you need to close to the raw material supplier jemti Paradip ro vartan PP hela PP jodi seti upon produce kale product lighter being lighter weight upon market hoji dharantu Chhattisgarh Raipur transport kariya padibo which is not so you need to have market there itself. That is the reason. It is not nobody knows. जदि सही केस हला सर पाइप टा केमती होची पाइप being आल्सो टेक्स पाइप भी बहुत बड़ो गोटे वैक्यूम माने सेतरे एयर जाउची ट्रांसपोर्टेशन रे pipe being a infra product, it is not packaging product. Pipe being infra product. Yeah. So this thing is naturally wherever requirement is there, it will be. Right? মনে করুন তো স্টর্ম ওয়াটার পাইপ দরকার ଆମର ପାରାଦୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣୁଛି that is ପୋସ୍କୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ପୋସ୍କୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ will transport slurry metal what you call mineral slurry through pipeline. Okay. ତେଣୁ ତାକୁ ତ କିଛି ରିପ୍ଲେସ କରି ହେବନି ତାର there is no alternatives. So ultimately if there is a requirement then it will come. So it is an infra product. Infra product ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଧରନ୍ତୁ ବାହାରୁ ତ ସପ୍ଲାଏ ହେବନି ଯୋଉଠି actually requirement ସେଠି ହିଁ ସପ୍ଲାଏ ହେବ. Packaging being we hope project it is use difficult. କରିବେ sir. We have time 7:30. Right. ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ Dr. Irfan Mir wants to speak something. Kindly. Yes, is it true, sir? Listen to it. Yes. Yeah. So you have to finish. Before he speaks, I should compliment that CPET is taking very good steps. But CPET जो Central Institute plastic जगह रे अपना Central Institute petrochemical engineering करंतु. Yeah. You do that so that people also will get training. It's already done. Already done, sir. But that is only in name. But it should also come in training. Thank you. Please. Sir, I would just like to add that in North we have Jaipur Center where already we have started the training in petrochemicals. It has also started in Ahmedabad and we are going to soon start it in Bhubaneswar as well. So that is one point. And second, I would like to add here that as Dhananjay sir was already talking about that you should have a facility for trying your product. So as far as that is concerned, we at CPET have the facilities available for the industries. So they can start their product using our machinery, our space, and when their product finds a good market, we can help them with the market as well, and we can help them with the technology. When they want to go for the pilot scale, they can go for their own setup. Till then, the risk will be very low. So they can use our machineries. We have all type of machinery available in Odisha at one center or the other, whether it is packaging materials or it is injection molded products, blow molded products. We are already helping a lot of entrepreneurs in all the three centers which are functional right now. So that is a bonus, and Mayurbhanj being very close to Balasore, so there won't be any logistic problems. If you have anything, you can directly, we'd be happy to help you in that. And as far as sustainability is concerned, so focus should be on circularity, not only on biodegradability, because biodegradability hasn't found a foot due to economic reasons as of now. So we have to look at a circularity angle for sustainability. And as far as the ban is concerned, that is only limited. It is not even 1% of the overall packaging material. So we should not be fearful of that ban. Rather, we have a very delicate balance between those banned products and the products that are being sold in the market. So I wish that we all will understand the importance of product identification, and in that we are very much with you. And as far as
biodegradability is concerned, a lot of work is going on in Bhubaneswar as well. So it will be in India, but it will take some time. Thank you so much for having me with you in this discussion. Thank you. Thank you. Can I request Dr. Nandi to please come up? In the meantime, if hello, can you hear me? Hello, Debo, am I audible? Am I yeah, audible? So not audible, still not audible, sir. Debo, I have one question, one or two questions. Please. Can I speak? Yes. Good evening, everybody. I just wanted to know whether for Mayurbhanj, we should start from the plastic park or individual entrepreneurs will start. If we wait for plastic park, then nothing can be done before 1 or 2 years. Because land acquisition will be a problem, government concern, like Dhananjay Babu told, don't depend much on government. If you can start your unit individually with your own land, then it will be immediately you can start. If you wait for plastic park, then maybe it take 3 years or so. So I think we should start, individual people should start. And another point is, Debo was apprehending that the product may be withdrawn from by government, and you make such product, which is now the demand is increasing, so government cannot. One product I am thinking, this UPVC windows. Now all these windows, and even aluminium is not strong. MS windows gone, wooden is obsolete. This UPVC windows, Fenesta company is monopoly. And there it is very, very costly. Fenesta company, because all the sections are coming from Indore. Nobody is manufacturing here. Sections are coming, these people are only assembling. They are taking order and assembling. So can we start the sections here? If somebody starts the PVC sections, window sections, then the demand will increase. It will not immediately. It cannot be stopped. As Debo was apprehending that government may withdraw. Government is not involved, so government will not involve. So you start with in your own land. Take the subsidies from government, but no infrastructure. Rightly कहले sir. Thank you very much, Aditya Babu. And I one thing that very good product you have identified, that is the window profile. Yeah. Similarly, one product came to my mind, that is WPC, wood plastic composite. The same way also it can replace wooden products. The wood plastic means there will be some wood. Some sawdust will be there, but very less. Again, you depend on trees. So this PVC. Or else you can use other inorganic kind of filler. Why not this UPVC sections? Yeah, UPVC, right? That is also a good product. I agree. I think if you manufacture it here, it will be very, very cheap. Because it is coming. Sorry, bole. Now people are bringing those sections from Indore and just assembling here. If you produce the sections here, definitely it will be cheaper, and there is no chance of closing the industry because windows will never stop. This use of windows will never be obsolete. Thank you. Dev Babu, I have got a meeting at 7:30. I'll be joining for that.
Thank you very much for lovely discussion we had. And if Mayurbhanj gets one or two for which our efforts are on, thank you very much for the program. Thank you for contributing, sir. Thanks. We have a hand raised by Jagannath Sahu. Jagannath, please come up. You are not audible. Your mic is in mute. Yes. Yes, actually, really এটা बहुत बढ़िया interaction ये थिला only thing जो बहुत सारा discussion ହେଲା ସେଟାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ବନେଇକି ତାପରେ ଇଏ କରାଯିବା ଉଚିତ କି କେମିତି କଣ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ବନେଇବା ପାଇଁ ରିଏଲି ରାଇଟଲି ସେଟ୍ କି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଲାଗିବ ସେଟା ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ ରହେ ଓକେ କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ତାର कॉमन इनफ्लुएंट प्लांट वगैरह सी जब गोटे यूनिट पूरा सब जिन निजे करुच्ची तार कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बहुत अधिका हो जाए जोटा कि पे बैक पीरियड बहुत बेसी बढ़ी जाए जमी फॉर एग्जांपल नागपुर रे बहुत सारा बेच प्रोसेसिंग यूनिट्स गुड़ा थाए कि तार सराउंडिंग मार्केटिंग येटा रोचे तेणु से टाइप टे एटलिस्ट किसी गोटे इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाई हवा उचित सो दैट यू नो धीरे धीरे तार साइड रे इंडस्ट्री गुड़ा आसी पारिबो जोटा कि कॉमन फैसिलिटी शेयर हो पारिबो तो सेटा ऊपर भी टिके फोकस हवा उचित मो हिसाब रे प्लस जगन्नाथ वेरी गुड प्लग एंड प्ले मोड रे आपण कहउचंती यू आर टेलिंग दैट प्लग एंड प्ले मॉडल विल फैसिलिटेट राइट आज्ञा तेनु कि who will do that either government will do or else privately we can do right so better not depend on government because government has given this job to a company called Semcorp. Okay. Semcorp is now developing a plastic park model at different places, including Baleshwar. Okay. Baleshwar रे हमर plastic park नहीं. Actually, सेठी जो गोटे जगह रे, some 5-10 companies they have come up. Okay. से माने plug and play नुहे. ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ର ମେଟେରିଆଲ ର ପ୍ରୋସେସ ୱାଟର କି ୟୁଜ୍ଡ ୱାଟର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହଉନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ହଉଛି ଓକେ କମନଲି ଯଦି ହେଲା ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟରେ ତେଣୁ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ if you have time you can visit there is a plastic park operating in କୋଉଠି ଅରବିନ୍ଦ କଲକାତାରେ କୋଉଠି ସେଟା ଜାଗାଟା प्लास्टिक पार्क तो सेटा तो बर्तन ऑपरेशनल एते हेनी तीनटा जमा यूनिट अछि प्लास्टिक पार्क रे सेठी न जाय की कलकत्ता रे आपन हुगली पाखरे गोटे एरिया अछि से एरिया रे 25 टा प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑपरेशनल अछि सेठी आपन जाय देखि परिबे हाउ दे आर ऑपरेटिंग बट इट इज बेसिकली इंडिविजुअली दे आर डूइंग इंडिविजुअली इट इज नॉट प्लग एंड प्ले जदि आपन से जिबे सेते लाभ होबनी आपनको रियली लाभ करिया पे हेले तेनु प्लग एंड प्ले मॉडल दिबा पड़िबो तेनु हमको किंतु सेटा पे गोटे प्रॉब्लम कोन हो स्टार्ट सेटा पे गोटे प्रॉब्लम कोन हो फॉर एग्जांपल मजे एज एन इंडिविजुअल बाबा गोटे लैंड अछि जोटा कि मे बी यू नो इंडस्ट्री पे सराउंडिंग रे रेसिडेंशियल अछि तेनु हम समस्त कर इंडिविजुअल से रकम ये थिबा दरकार जोठी कि इंडस्ट्री से पे गोटे इंडस्ट्री आइडेंटिफाई एरिया हबा उचित जोटा रे कि यू नो गोटे कंपनी तास आउट कंपनी एमती करके एक्सपांड हो पारिबो अदरवाइज स्टैंड अलोन रे माने तार कॉस्ट ऑफ लैंड जोटा प्रोजेक्ट रो सेटा बहुत बेसी बढ़ी जिवो मते लागुची अनलेस जनेकार ऑलरेडी लैंड टा बहुत आगरू एक्वायर हे की अछि जनरली आपण देखिबे जेतले जदी इंडस्ट्रियल एरिया रे गोटे लैंड निया होची तार रेट टा कंपैरेटिवली कम रहउची एज कंपेयर टू माने सेंटर एरिया रे जदी की नियर बाय रहउची तेणु एनवायरमेंट क्लियरेंस एगुड़ा सब भी तेणु सेटा गोटे भी एस्पेक्ट नजर रखिया पे पड़ियो मो हिसाब रे आपनकर प्लास्टिक पार्क ऑलरेडी ऑपरेशनल अछि पारादीप रे ओके इंडियन ऑयल इज आल्सो पार्टी इंडियन ऑयल आल्सो हैज 59% इतरे मूवी पर्सनली आई एम डायरेक्टर फ्रॉम इंडियन ऑयल पारादीप प्लास्टिक पार्क कुछ डायरेक्टर फ्रॉम इंडियन ऑयल
So you want to visit, you can visit, you can see that. But there are only three manufacturing units which is operational now. Uh-huh. Okay. Now And just to land, introduce more general manager ଅଛି IDBI bank ରେ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଅବଜର୍ଭ କରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେହି ନା କେହି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଏତେ ବଢି ଯାଉଛି ଯେ କି କମ୍ପିଟିଟିଭ ହେଇପାରୁନି ଅନଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଟେକ୍ କ୍ଲିୟର ରହୁଛି ଯେ ହଁ ମୋର but that is Mayurbhanj start କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ individually let them come 2-3 units if they are coming together at one area, so there if land is available then it can be developed. We know the model. We know the model. ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ପାରାଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ପାର୍କ ଅଛି ଅଲରେଡି ସୋ ହାଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଣେ ସେଟଅପ୍ କରୁଛି with an individual arranging everything a vis-a-vis ଜଣେ ସେଇ ପାର୍କରେ ସେଟଅପ୍ କରୁଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆଉଟପୁଟ୍ ତ ସେମ୍ କଷ୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଯିଏ ରଖୁଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ମାନେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଟା ଯଦି ସେଟଅପ୍ କରାହଉଛି କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କମ୍ପିଟିଟିଭ କେତେ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଏସେନ୍ସିଆଲ ର ମେଟେରିଆଲ ପଲିମର 75% to 85% cost is raw material price. Correct. Raw material availability ଆପଣ ପାରାଦୀପରେ available ହଉଛି କି ଆପଣ ହଳଦିଆରେ available ହଉଛି right? ଆପଣ ତାକୁ transport କରିବେ to ମୟୂରଭଞ୍ଜ କି ଆପଣ ବାରିପଦା ହେଲା ଆଜ୍ଞା raw material transport କରିକି ଆଣିକି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ପାରାଦୀପ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ right? Right. So which is not economical. Transporting finished product is not economical. Rather, transporting raw material is economical. ତେଣୁ ଆପଣ close to ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ସହିତ ହବା ଦରକାର ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେତିକି ମାର୍କେଟ ଅଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ସେଇଟା ଆପଣ ଆସେସ୍ କରିବେ ସେଠି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସେଠି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି with my idea that there are a lot of mines. So, lot of packaging material can be used. Jumbo bag, geotextile can be used. So, similarly, आपण access करिवे. आपण decide करिवे पड़ी. Right. देबु जो सीपेट रे जने कनेक्ट रे थिले तांकर किछि स्टडी अछि कि जोटा कि एरिया वाइज को यूनिट बेटर करि परिबो सेई टाइप रो किछि स्टडी अछि कि तांकर सेटा कथा है कि को प्रोडक्ट कोटा मयूरभंज पई हां राइट तो सेटा कहिना कि गाइडिंग फैक्टर हे परिबो जे फॉर एग्जांपल हम मयूरभंज रे आज्ञा ने जगन्नाथ बाबू देव बाबू मु गोटे सजेशन देबी CPET is a institute. Okay, CPET is a training institute. So they are not, directly involved in a big way to industry. Correct. So ताका पाखरे जो नॉलेज अछि ना सर ताका पाखरे जो नॉलेज अछि जे एई एरिया रो they may input wise. I don't think that the concerned CPET person would know that. We don't expect that. Gote काम करंतु being local, you can take you can form a committee kind of thing. The तीन जन लोक नहीं जानतो. From raw material side, you can take IOCL representative. From for funding side or for investment side or for capital side, you can take yourself. You are from that segment. Third is you can, as a knowledge partner, you can take CPET. Correct. Gote committee. That is a good suggestion. Right. तीन जन तो आपण इन्वॉल्व करी गोटे कमिटी करंतु and they can scan through Mayurbhanj. What is the potential? Already we have done some initial scanning for Odisha. जोटा कि अरविंद देखेले. Similarly, Mayurbhanj रे कोन हे परिबो, that also can be assessed. So ready-made मत लागुनी ready-made अछि बोली. आज्ञा सेटा को आपण मोस्ट प्रोबेबली अभी देव बाबू आज वेबिनार कले मोस्ट प्रोबेबली 6 मास डाउन द लाइन अगेन वेबिनार करिवा डिस्कशन करिवा राइट एब्सोल्युटली थैंक यू फ्रॉम माय साइड थैंक यू
Professor Nandi, are you there? Professor Nandi ସେ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି is still there in the list. Is there in the list? I think he has written in the this text that he had an emergency call from hospital and he's leaving. ଓହୋ Hmm. ଓକେ ଓକେ So he is a medical doctor. So uh, yes. So finally, I would like to thank all of you to be a part of this beautiful journey of making Mayurbhanj and Odisha prosperous. The time to will continue this journey and reach at a meaningful conclusion. Thank you. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Thank you, Dan. Thank you, Ravinder sir. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you, Thank you. Devabu. Pit. And thank you all the participants. Thank you. Signing off.
ରାତିରେ କଣ ବନେଇବାର ଅଛି ତ? ରାତି କିଛି ବନେଇବାର ତ ନାହିଁ? ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରମ ଦିଟା ମାଛ ଭାଜିବୁ ନା ସେ ମାଛ ଦିଟା ସେ ଝୋଳରେ ପକେଇ
ମାମା ରାତିରେ ଭାତ ଅଛି କି ରୁଟି ଅଛି? ରୁଟି କରିବୁ, ତାକୁ ଦେ ଅଟା ଗୁନ୍ଥିବ ଦେ, ତାକୁ କାମ ଦେବେ ଗୁର୍ଖାକୁ। କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ କେତେଟା ଆସିବ ମାମା? ହଁ ଡିପୋ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ଆରେ ବଡେ ନେ ନା 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 ତୋତେ ଯାଇଥିବ ଆଣିତେ, ତୁ ଗୁର୍ଖା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ଆଉ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦବୁନୁ ରିଗାର୍ଡ, ସେ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦବ ନା? ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାଇଁ କିଛି? ଏମିତି ସଂସାର ଚଳେ ନା? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯାଇକି ଆଣିତେ ନେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ଯିବି ଆଣିତେ। ଆମେ ତୁ ମୁଁ ଯିବା ହେଲା, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବୁ ତ। ଅଜବ ପିଲା। ନା କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇ ରହ। ମାଛ ସବୁ ଭାଜି ଦବୁ ମାମା, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ, ଦେଖ ତାହେଲେ ତୋ କଥା।
ହଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, ନଡ଼ିଆଟା ଫୁଟେଇଦେବା ଆପଣ।